rise to move that the bill further to amend the Central Goods and Services Act, Tax Act 2017, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Would you like to speak, Honorable Minister? Yes, sir. With your permission, I just want to highlight what this amendment is all about. Sir, you are aware that the GST itself subsumed more than 17 taxes and 13 cesses of the civil and technical members are specified in section 110 of the Act. 109 gives you the power, 110 gives you the details of what the qualifications experience will have to be now. Under the GST law, sir, adjudicating orders are passed by the GST officers from the center and state, depending on the jurisdiction allocated to each one of them. Now, appeals are made against these orders, which are passed by these adjudicating officers, and that appeal lies with the first appellate authority, who's an officer again within the tax administration, and therefore of the respective center and the state. The second appeal against the orders of the first appellate authority under the center as well as under the state tax administration lies with the GST AT appellate tribunal, GST appellate tribunal. So this is the first forum at which the GST litigation process converges within the state, that is, the appellate orders passed by the center and the state GST officers become a part of the same appellate forum, that is the GST appellate tribunal. Now, earlier in 2019, the GST AT benches, appellate tribunal benches, were notified, but the same was challenged in the high courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition which was in the case of the Revenue Bar Association versus Union of India in the Honorable High Court of Madras, the High Court held as follows, and I quote, sir, "The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of judicial members on the bench," unquote. So the Honorable High Court of Madras struck down section 109 and section 110 of the Central GST Act of 2017, by which we appointed the tribunal and by which the appointment, the qualification and the term, everything else was decided. Now that that got struck off, simultaneously the tribunal's reform of 2017 of 2020-21, which was brought in, also standardized the appointment, the terms, the qualification of all the tribunal benches, and the appointments which are being made to them have all now become standardized for all tribunals. That was happening parallelly. So, given all these developments, in the 47th meeting of GST Council, which was held in Chandigarh on 28 and 29 June, the GST Council discussed the changes that are to be brought in, and brought in such a way that the GST appellate tribunal in the GST law, which is there already in it, but it has to get constituted, we have to bring them in conformity with the judgment of the High Court, which was the Madras High Court. So in the GST Council meeting, it was decided that we'll constitute it. So the constitution also happened, constituting of these people, the tribunals were also happened, and then it was realized, I'll just tell you what was constituted also, sir. The report of the group of ministers which went into seeing all this was submitted to the council, and the council then took a call that we amend the 109 and 110 of these sections. Then the amendment of the Finance Act, through the Finance Act in 2023, the GST appellate tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are notified now. So the principal bench shall be located in Delhi and shall have a president, a judicial member, a technical member which is center,
and a technical member, which is state. The state benches shall also have two judicial members, a technical member of the center and a technical member of the state. All this was notified even by September 2023. Thereafter, sir, this is the immediate background of this amendment that we are placing before this honorable house now. Thereafter, it was brought to the notice of the ministry by the Honorable Chief Justice of India in his administrative side through the registrar that the following aspect of the service and its terms are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. The Tribunal Reforms Act of 2021 brought a certain kind of rationalized approach to all the tribunals which exist in the country. And therefore, in alignment with this, the Chief Justice wanted the CGST Act also to be in line with it, and therefore the tribunal also to be formed in the fashion. So the 2 points on which the Chief Justice came in to advise us, and the advice has been well taken, is that the maximum age limit for the post of the president and the members is 67 and 65 years in the CGST Act before 2 days, if the House approves amendment. So the maximum age limit for the post of the president and members is 67 and 65 years in the currently prevailing CGST Act, whereas under the Tribunals Reform Act of 2021, it is 70 years and 67 years respectively. That is one point which was flagged by the Honorable Chief Justice of India. The second point that he pointed out, sir, is that the CGST did not have the provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the rules framed under the Tribunal Reforms Act. So if the Tribunal Reforms Act of 2021 had something and we didn't have it in the CGST, it wouldn't be right. So for appointing even advocates who with a standing of 10 years should also be brought in. So these are the two points which the Chief Justice of India have highlighted. We have now brought those as amendments to the current act, and those are the amendments for which we are seeking the approval of the House. Thank you. Honorable Minister has spoken. Now the motion is moved. Now I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Mani Dr. Amar Patnaik ji. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, on behalf of my party, the Biju Janata Dal, we support the amendment which has been brought in into the GST Act for exactly for the specific reasons that the Honorable Finance Minister has stated. That is number 2, to bring it in uniformity with the Tribunal Reforms Act 2021, and also to ensure that the number of cases that was going to the high courts because of the absence of this particular layer of adjudication would actually become operational, and therefore the number of cases would actually come down from the high courts and the Supreme Court, which already have a large number of cases. For the record, I think the Honorable Finance Minister has stated in several places that there are about 15,000 appeals which are pending at various levels before this particular amendment has been brought in, and this was 25% more than the last year. This is the latest figure which is available, around 15,000. Now, this particular amendment, when passed, would actually settle a number of these issues, and therefore it is very welcome. I compliment the government and the Finance Minister for it. Having said so, sir, there are two issues which I wanted to raise before the government by way of suggestion. Of course, one concern is that having the structure in place is one thing, but getting the vacancies filled up is another thing, and that is very important. In 2021, August 2021, the Honorable Supreme Court, the then Chief Justice, Justice Ramana, observed that there were 240 vacancies in these tribunals.
and he expressed concern, and the advice to the government was to fill them up very quickly, because otherwise the entire process of the objective of forming these tribunals would not be achieved. Now, in 2022, to an unstarred question, number 1060, on 15/12/2022, the Minister of Law and Justice has given a position of vacancies in the tribunals. Now, unfortunately, madam, these vacancies continue to be there at various levels. For example, in the Ministry of Corporate Affairs at the NCLT and the NCLAT level, the Ministry of Labor and Employment, in the Ministry of Finance at the DRT level. I don't want to get into each of the vacancies against each of these ministries, but these numbers, even after 1 year of the Honorable Supreme Court exercising, expressing concern, remains to be around 200 and 210. So I thought the next important thing that the government should be addressing is to fill up these vacancies by either revamping the existing machinery or process of selection of these members, judicial and technical members to these tribunals, or having a one-time measure to settle or to fill up these vacancies and then make the process roll on. Otherwise, the full benefit of this entire amendment would not be available to the people. The next point which I wanted to mention, sir, is the fact that the entire GST principle of one nation, one tax was brought in with the view to simplify the entire taxation law, have a common taxation law as far as indirect taxes are concerned in the country, and as Madam said, by subsuming a number of central and state taxes, that would improve the ease of doing business. This is one such step, and of course, many states have already, and in the GST Council, have taken the next step of having a one-time amnesty scheme also for settlement of GST dispute in the line with Sabka Vishwas scheme of 2019. But there is one more step which probably I thought I would suggest by way of suggestion to the Honorable Finance Minister, that is the authority of advance ruling under GST. Now, this particular architecture is welcome, but their entire view of looking at this thing is completely revenue-centric. Now, with the result that none budge from their position and there is no settlement. So, each of the states have done this advanced authority for advanced ruling. Is there a need for the government and the GST Council to consider for a central authority for AAR, which could address the issues relating to place of supply and resolve the conflicting views of state level advanced authority for rulings? This is where I think a big bottleneck is there. Honorable Finance Minister may like to address this. The second one is the recourse to alternate dispute resolution mechanisms, sir. I think this is a very potent method. And since we have brought in the mediation bill also now, it should be taken advantage of to reduce the number of appeals that is happening on the GST front, because that would improve the ecosystem of business in the country. The mediation bill the effort in this direction actually should come through the GST authorities themselves, because leaving it to the private authorities, actually the revenue-centric approach always, ensures that the dispute is never settled. If the government itself uses the mediation bills, mediation act that we passed recently, some of the cases which are very clear and where the dispute can be easily settled, and settles these cases, it would give a big impetus to the private parties also to use this forum to settle many of these disputes. So overall, sir, I think the process, the entire architecture, there is nothing to quarrel about that. It is a welcome step. But we have to fill up these vacancies. And number two, probably look at other avenues of settlement of disputes, including alternate dispute redressal mechanisms. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विस्तार से इस बिल के प्रावधानों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट आर बीइंग अलाइंड विद द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 to initiate the administrative process for operationalization of GST appellate tribunals at the earliest. Actually, the age has been increased
It is allowed from 67 to 70 for President of the Appellate Tribunal and for the members from 65 to 67 years. And it has been aligned with the Tribunal Reforms Act 2021. सत्य महोदय, जब हम जीएसटी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस बिल की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, तो हम आज के दिन श्री अरुण जेटली का स्मरण अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और श्री अरुण जेटली जी, जिनके बारे में कहते हैं द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, अगर पूरे देश के सभी राज्यों और सभी राजनीतिक दलों में उन्होंने सहमति पैदा नहीं की होती, तो इस देश के अंदर जीएसटी लागू करना असंभव कार्य था। और आज हम जब 7.5 साल पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कहीं सीपीएम की सरकार, कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी, अलग अलग दलों की सरकारें, अलग अलग राज्यों के अंदर टैक्स रेट्स, अलग अलग राज्यों में वैट की प्रक्रिया इतनी अलग थी, और उन सभी राज्यों को उन सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट करके और वन नेशन वन टैक्स ये इम्प्लीमेंट करना साधारण काम नहीं था। मैं तो इस राज्यों की वित्त समिति का और चेयरमैन रहा, और मैं जीएसटी और वैट से लगभग 20 साल से जुड़ा रहा हूं। मैं कितना कठिन काम है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं श्रोती महोदय, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने हित। पंजाब और हरियाणा में परचेज टैक्स, उनको they were earning more than 5,000 crores as a purchase tax from procurement. Maharashtra was earning more than 5,000 crore from octroi. बिहार जो है वो इंट्री टैक्स से पैसा अर्जित कर रहा था, और कोई राज्य इन टैक्सेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं श्री अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बारे में एक शब्द में द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, और उन्होंने सभी पार्टियों के लोगों को एक साथ बैठाकर और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करवाया। और मैं सभी दलों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, प्रणब मुखर्जी नहीं कर पाए, वो काम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखला दिया। तो इसलिए सती महोदय, दूसरी एक बड़ी बात है, जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी के अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, और केंद्रीय वित्त मंत्री अभी निर्मला जी हैं, वो उसकी चेयरमैन है। पिछले 7.5 साल में एक निर्णय छोड़कर एक भी निर्णय वोटिंग से नहीं हुआ। बाहर जाकर कुछ भी लोग बयान देते हों, विरोध करते हों, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। ये भी कोई साधारण काम नहीं है। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने देखा इनको कि अरुण जेटली के बाद हम लोग को डर लगता था कि जीएसटी काउंसिल कैसे चलेगी, क्या अरुण जेटली जिस से चला पाते थे कोई दूसरा चला पाएगा। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके पेशेंस की दाद है। भले सदन में कई बार हमको लगता है कि इम्पेशेंट हो जाती है, बट आई हैव सीन निर्मला जी sitting for hours and hours and listening to the suggestions and arguments given by the different political parties or different finance ministers. इसे सती महोदय, ये एक ऐसी बॉडी है जो देश के सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, सभी व्यूज को रिप्रेजेंट करती है, घंटों चर्चा होती है, और अंत में बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है। एक निर्णय केवल वोटिंग से हुआ था, वो भी सीपीएम के केरल के वित्त मंत्री तो थॉमस आइजैक, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर, जबकि सारा सदन एकमत था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो वोटिंग कराऊंगा, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर। उस एक मुद्दे को छोड़ दे तो आज तक
किसी भी मुद्दे पर कभी भी वहां पर वोटिंग नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मुझे तो लगता है कि कुछ दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की बॉडी बनाई जाने की आवश्यकता है, खास करके मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कि बैठकर निर्णय क्यों नहीं हो सकता है, क्यों अलग अलग राज्यों में टैक्स की रेट्स अलग होगी, प्रक्रिया अलग होगी, क्यों नहीं पूरे देश में वन टैक्स वन रेट हो सकता है। इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बाकी कई विभागों में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। छत्र महोदय, इस जीएसटी की एक बड़ी खासियत ये रही कि सब कुछ ऑनलाइन है, यानी आप अमेरिका में भी बैठकर टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं तो लंबे समय तक बिहार का वित्त मंत्री रहा 2005 से, और मैंने वैट के समय में देखा कि लोगों को बैंक जाना पड़ता था चालान पास कराने के लिए और ट्रेजरी में जाकर पैसा जमा करते थे। रिटर्न फाइल करना कितना कठिन काम होता था। आज सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, जो टैक्स जमा करना वो ऑनलाइन, रिफंड ऑनलाइन। आपको कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देखा नहीं कि ऑफिस कहां पर है, और लोगों ने देखा भी था एक समय के अंदर। और ये जीएसटी नेटवर्क, ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। करोड़ों करोड़ ट्रांजैक्शंस को किस तरह से और कंपाइल करता है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, ये जीएसटी का नेटवर्क जो है, ये भी भारत सरकार के प्रयास से और आज चल रहा है। सती महोदय, वो दिन भी आपको याद होगा, हर राज्य में चेक पोस्ट होता था। अगर तमिलनाडु से कोई गुड्स लेकर चला और अगर बिहार तक आना है, तो उसको एक आधे दर्जन राज्यों में चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता था, अपने गुड्स की जांच करानी पड़ती थी। सारे बैरियर्स खत्म, सारे चेक पोस्ट खत्म, लॉजिस्टिक कितना आसान हो गया, और इसके कारण कितने पेट्रोल की बचत हुई, कितने डीजल की बचत हुई, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और पूरे देश के अंदर जो टैक्स रेट तमिलनाडु में वही बिहार के अंदर, और जो पांडिचेरी में है वही टैक्स रेट जो है मिजोरम के अंदर है। तो इसलिए वन टैक्स वन रेट। और सौती महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता इसको गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहते कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अगर गब्बर सिंह टैक्स है तो घोषणा करें कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई, जो बननी नहीं है, तो हम जीएसटी को खत्म कर देंगे, है मत तो घोषणा करें। लेकिन आए दिन में देखता हूं कि वो कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है किसी कांग्रेस शासित राज्य की हिम्मत कि जीएसटी में काउंसिल के निर्णयों को अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंट न करें। मुझे याद है कि एक साल पहले ये कुछ चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, फूड ग्रेन आइटम्स और बाकी पर। कितना विरोध हुआ, लेकिन क्यों कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको लागू किया। अगर वो टैक्स रेट गलत था तो आप लागू नहीं करते। और सबसे पहले केरल की सरकार ने लागू किया, जो बाहर में इतने बयानबाजी कर रहे थे। इसलिए सती महोदय, बाहर जो बयान दें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन सदन के भीतर जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है उसको सभी राज्य जो है और यथावत लागू करने का काम करते हैं। और सभापति महोदय इतना ही नहीं, तो इसके अंदर 1,67,000 करोड़ का नवंबर महीने में और टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है 1,67,000 करोड़। और जिन लोगों को लगता था कि जीएसटी आएगा तो टैक्स कर संग्रह बढ़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो रिकॉर्ड 1,67,000 करोड़ से ज्यादा का संग्रह हुआ। और 1,60,000 करोड़ की जो लिमिट है का जो, उसको तो इस साल एक साल में कई बार जो है इन लोगों ने पार करने का काम किया है।
और सती महोदय, अब देश के जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी जीएसटी को स्वीकार कर लिया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब जीएसटी लागू हुआ उस समय 64 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे। मीन्स एट दैट टाइम ओनली 64 lakh businessmen were paying GST. Only 64 lakh were registered under GST. और आज उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1,38,00,000. तो 64 lakh से it has been increased to 1,38,00,000. लगभग संख्या उनकी दुगने से ज्यादा हो गई। और इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया। जो इंस्पेक्टर राज शब्द चला करता था वो इंस्पेक्टर राज समाप्त हो गया। सती महोदय, इस अवसर पर मैं निर्मला जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक बड़ी चुनौती है फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम्स की। और ये मैं जब इंग्लैंड गया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इस अध्ययन करने के लिए, तो उन देशों में भी देखा कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी। और आज जीएसटी की सबसे बड़ी अगर कोई एक चुनौती है तो ये फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जीएसटी में जो इवेजन है, टैक्स का जो इवेजन हो रहा है इस फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम के कारण 1920 में द इवेजन वाज 40,000 करोड़, which increased to 49,383 crore in 2021. Again, it increased to 73,000 crore in 21-22. और 22-23 में increased to 1,31,000 crore. और अभी तो 23-24 का भी तो नवंबर महीना, दिसंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का आंकड़ा है कि टैक्स इवेजन which has been detected 1,51,000 करोड़। और अगर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 अगर ये 4.5 साल का आंकड़ा ले तो 4,46,000 करोड़ का टैक्स इवेजन डिटेक्ट हुआ है। और करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इवेजन था वो रिकवर हुआ है और करीब 1400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये मैं जानता हूं कि जीएसटी काउंसिल के सभी राज्य के लोग लगे हैं कि ये जो टैक्स इवेजन हो रहा है और इसको रोकने के लिए किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। ये सारा काम ऑनलाइन जो सिस्टम है वही रेड फ्लैग दिखा देता है, वही बता देता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा इस्तेमाल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कहीं इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। तो निर्मला जी के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है इस फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है। उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एक तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन and return process can be considered for those taxpayers who intend to buy and sell only within a state, जो interstate business नहीं करते हैं, अपने ही राज्य में माल की खरीद करते और बिक्री करते हैं, उनके लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन और रिटर्न का प्रोसेस जो है इसके बारे में और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बिकॉज सच टैक्स पेयर्स do not pose the risk of passing interstate credit, which can be buried deep through a network of shell companies. दूसरी बात ये कि जो fraudulent credit claim करने वाले जो लोग हैं, मैं उसके बारे में भी सुझाव देना चाहूंगा। However, fraudulent credit claims are causing concerns not only to government but also to genuine taxpayers whose credit claims are denied because they have accrued from fraudulent sources and the taxpayer is unaware about this. इसको डील करने के लिए robust system of risk profiles may be set up to forewarn likely suspects and subjecting to such persons to comprehensive and physical scrutiny
बिफोर ग्रांटिंग देम रजिस्ट्रेशन। और मेरा सुझाव होगा कि इस तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो क्रेडिट हैं उनका क्वेंटम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, इतना ही वो केवल क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो ठीक व्यवहार करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके क्लेम को और बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन का जो थ्रेशोल्ड है, I don't remember, madam, what is the threshold as on today, but I think it is 40 lakh is the threshold. So if it is threshold 40 lakh, it was decided about 7.5 years back. So GST Council could think of increasing the threshold, raising the threshold from 40 lakh to 60 lakh. And I still remember when Arun Jaitley was there and we were discussing about the threshold, because earlier it was 20 lakh. So there was suggestion also 60 lakh, 2 minutes और, but ultimately it was decided for 40 lakh. तो मुझे लगता है कि अगर 60 लाख थ्रेशोल्ड का अगर निर्णय लिया जाता है तो हजारों की संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाएंगे और आपको जीएसटी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अंतिम मेरा सुझाव है वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, क्योंकि हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड 71 सो कॉल्ड नोटिसेस involving GST to the tune of 1,12,000 crore have been issued to online gaming companies during financial 22-23 और 23-24। इस संबंध में मैं मैडम इतना ही कहना चाहूँगा, to avoid a situation like the online gaming issue where huge demands have been created for the entire GST period and bunched in a just few months। कुछ ही महीनों में आपने नोटिस देकर पूरे पीरियड का 1,12,000 करोड़ की नोटिस दे दिया। There should be ample clarification to trade and the tax administration on other major contentious issues like virtual digital assets and services relating to the digital economy। तो इन 2-3 सुझावों के साथ और अंत में मैं यही कहूँगा, सरस्वती महोदय, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो लोगों ने कहा कि दुनिया की जिस देश में जीएसटी लागू हुआ वहां सरकार चली गई, और देश के अंदर दुनिया में सैकड़ों सरकारें थी जो जीएसटी लागू होने के कारण चुनाव हार गई, और यही लोग कह रहे थे भारत के बारे में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जीएसटी लागू किया और चुनाव हारने के बजाय प्रचंड बहुमत से और हम दोबारा लौट कर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी। ऑनरेबल श्री विडामस्थान राव यादव। Thank you, Chairman, sir. 5 minutes. Thank you. Oh, Honorable Chairman, sir, fellow members of the House, as we stand here today, we mark a crucial milestone in the journey of Goods and Service Tax Act, the proposed establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal. This long-awaited body promises a dedicated platform for the taxpayers to seek clarity and addressal on their GST concerns, alleviating the burden of navigating the existing legal system. I would like to begin with some commendable aspects of the bill. Positive, sir. As mentioned above, the Goods and Service Tax Appellate Tribunal represents a dedicated platform to seek clarity on tax positions and resolve outstanding appeals against first appellate orders. The GSTAT will provide taxpayers with a faster and more convenient way to seek redressal for tax concerns. This could potentially reduce legal costs and delays associated with navigating the High Court system. Sir, our concerns and suggestions are higher number of GST slabs. Current system, regular taxpayers face 5 primary slabs, that is 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and additional rates like 3% and 0.24% plus a varied cess. Complexity and confusion. India's high number of GST slabs
5 primary and 2 additional and plus yes creates confusion for taxpayers, increasing administrative burden and potential errors. So multiplicity of rates hinders tax administration, requiring extensive resources for managing different rates and preventing leakages. Our suggestions are gradual reduction. Implement a phased approach to reduce the number of slabs, potentially merging adjacent rates or creating broader categories, that is 3 to 4 times over time. Rationalized cess system. Review and streamline the cess structure, potentially merging or eliminating certain categories or simplifying calculation methods, sir. Strengthening IT infrastructure. The goods and service tax network has been plagued by repeated technical glitches, disrupting smooth return filing for businesses. These malfunctions are not isolated incidents. In 2019, a system crash triggered by a surge in filings caused widespread inconvenience and hindered compliance efforts for thousands of taxpayers. Our suggestions are scalable infrastructure, upgrading the GSTN infrastructure to handle spikes in user activity and increased data volume can prevent crashes and ensure system stability during the peak periods. Data reconciliation mechanism. Implementing the automated data reconciliation system can identify and rectify discrepancies between taxpayer data and government records, streamlining return processing and minimizing errors. User-friendly interface redesign. Simplifying the GSTN portal interface with clear navigation and plain language can enhance user experience and improve accessibility for taxpayers with varying technical proficiency. By addressing these challenges and implementing the proposed solution, the GSTN can become a more reliable and user-friendly platform, facilitating smooth return filing and enhancing compliance for businesses across India. Sir, our concerns of anti-profiting matters. The effectiveness and fairness of the Competition Commission of India in fulfilling its intended role of preventing profiteering after GST rate reductions is under question. Several factors contribute to this concern, sir. Case backlog. With nearly 130 cases pending as of October 2023, the CCI faces a significant backlog, causing delays and potentially deterring businesses from passing on rate reduction due to the fear of lengthy investigations and penalties. Streamline case processing, sir. Implement measures to expedite case resolution, such as prioritizing urgent cases, setting clear timelines for investigations, and utilizing technology to automate processes. This will reduce the backlog and encourage businesses to comply with the CCI's mandate. Minimize compliance burdens. Consider simplifying procedures and audits for small and medium enterprises, potentially through self-assessment mechanisms or tied compliance requirements based on the business size. This is our conclusion, sir. The establishment of Goods and Service Tax Tribunal, Appellate Tribunal, represent a significant step forward in the evolution of the GST system. This specialized forum for taxpayers holds the potential to streamline dispute resolution and alleviate burdens on the judicial system and foster greater confidence in the overall tax administrative framework. So, however, to truly unlock the full potential of the GST system, we must acknowledge the need for further systematic improvements. The issues surrounding the complexity of the slab structure, the challenges associated with the goods and service tax network infrastructure, and the concerns regarding anti-profiteering measures cannot be overlooked. With this concern and session, we, on behalf of the YSRCP party, support this bill. Thank you, sir. Thank you, Manya Vidamastan Rao ji. All members, you are supposed to speak, not to read your speeches. Yes, thank you. Manya Dr. M. Thambi Durai ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to participate in the discussion on the Central Goods and Services Amendment, Second Amendment Bill brought by Honorable Finance Minister
to amend the Central GST Act 2017, sir. Honorable member, former finance minister of Bihar, your state, he raised many issues regarding the state, how the certain states are like Kerala, Tamil Nadu, how they are raising that certain problems. I want to bring to the kind notice to the through you to Honorable Finance Minister and the government also, sir. Even though it's putting a single tax, the tax revenues are coming and sharing, both the states are sharing. In Tamil Nadu, for example, say, the inspection Raj, our Modi said, former finance, there is no inspection Raj. But in Tamil Nadu, if you take a lot of inspection Raj is going on, harassing the people. For example, if the secretarial department is also there, they are coming. Instead of GST, people are not coming. GST people. These sales tax people are harassing everywhere, going and collecting, torturing, putting fines and everything that creating. Because, and I'm sir, regarding it, because why we are collecting the tax and everything to help the people. Now, present important situation of Tamil Nadu, what we are facing, that I want to highlight, because Finance Minister is here, sir. On 18th December, historic rains and subsequent flood paralyzed life in the southern states of Tamil Nadu, namely Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi, and Kanyakumari. Unprecedented heavy rain in these 4 districts caused severe damage to crops, for properties, infrastructure facilities. This Maroon district had cut off from the rest of Tamil Nadu, extreme damage. But the present government, what Tamil Nadu government says, due to meteorology, they are not given properly forecasted that. Therefore, even chief secretary level, they are telling this kind, accusing the central government as well as the meteorology board. Is a wrong thing, sir, because the state government failed to solve all this, knowing that how to handle them, how to help them, sir. In that respect, for example, infrastructure, roads, like canal, tanks, all have been affected in southern district. My leader, Adapadi Palaniswamy, former chief minister of Tamil Nadu, and ADMK party leader, visited the affected people in those districts and consoled them. He asked the government to provide them food, Tamil Nadu government to provide them food, water, and milk immediately, which their people are not getting. Had the administration taken sufficient precaution measures, Tamil Nadu government had taken sufficient precaution measures, people would not have suffered so badly, sir. The government should immediately undertake rescue and relief of operations. Our leader and former chief in Tamil Nadu, Tamil Nadu chief minister, former chief minister, Sri Adapadi Palaniswamy, demanded that a sum of rupees 25,000 crores has to be given each of the affected farmers, and an amount of 10 lakhs should be given to the kin and kin of the 8 persons who died in Tirunelveli. Sir, and also I request, sir, especially the state government, what they are doing, putting always, they're collecting the money from central government. We don't know how they are spending, what they told me, could not understand. But always putting the blame on some other side, failing their GST. No, subject means, sir, because it's a GST, because our former finance, your finance minister details said about the subject, what subject, in the correlation, I'm also speaking that, sir, you have to allow me, because serious matter. If you take Tamil Nadu tax system, if you take what they are doing, in Tamil Nadu government, they are increased, they are blaming central government not getting the fund, but they are raising fund as they like, affecting the Tamil Nadu people. They are putting taxes, increased property tax heavily, and also proper registration tax also increased there, or property also increased. Electricity rates also increased. Milk price also increased. And also, sir, you know very well, most of the governments which are ruled by some other, I don't want to mention the governments, most of the governments, they are blaming the central not to get the money. They are doing the most of the taxes, collecting that is especially liquor is going on. Wherever you see, sir, I'm coming to the point, because of most of the things, the government, excise department, through the excise department, especially, their rates they are increasing more and more and collecting money. Because common men are affected.
They cannot blame the central government. But what they are doing about the Tamil Nadu government, if you take, they are outlets that what are these kind of property tax increasing, property registration tax increase, electricity bill increased, and also I'm coming to the petrol chest. Petrol chest is a central government is requesting government to reduce it, but Tamil Nadu government in the election manifesto, the DMK government says they are going to reduce it. Please speak But on they the have not subject. reduced. These are tax systems, I am telling Right you. now, They are not reduced the it's on tax. GST. But at the same time, that GST also, they are getting a lot of money from Tamil Nadu central government. But they are not properly utilizing. They are not in prepared action. That is why the most of Tamil Nadu people suffered now. The Chennai also, what happened, we know. 4,000 crores we had, we don't know. But they demanded 5,000 from central government. Now, last time, yesterday also, our chief minister, Tamil Nadu chief, came and met Honorable Prime Minister seeking the help. But central government, even whether they are using properly that money, that is what I'm raising here. That is, I'm more concerned that our people who affected these areas, especially I told you regarding the districts in Tamil Nadu, Yes, speak on the subject now. Tirunelveli, Tenkasi. Yes, you have already spoken on this. I finished. Speak on the subject. Therefore, our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy requested the Union government and Prime Minister should consider people's sufferings and provide sufficient relief funds, because they are not having any faith on the state government. They are not properly utilizing, only putting blames. I request the central government come forward to help rescue our Tamil Nadu people, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable Dr. K. Lakshmanji. Thank you, Deputy Chairman, sir. At the outset, I would like to support the bill introduced by Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharamanji. It not only extends the upper age limit of GST appellate tribunal chairman to 67 years, but also allows the advocates with 10 years of experience to be eligible to become members. Sir, the bill introduced by Modi ji's government is not only a reform, it will not only increase the overall efficacy of the functioning of tax tribunal, but will promote the ease of doing business. Due to inability of the earlier Congress government to introduce such reforms for the last 70 years in their rule, more than 80,000 cases are still pending before the indirect tax tribunals of the country. The introduction of bill not only helped drastically, but reduce the pendency of cases. हमारे नेता सुशील जी ने विस्तार रूप से जीएसटी के बारे में वो जिक्र किया, और मैं ज़्यादा राजनीति न करते हुए इतना ही बताना चाहता हूं कि जहां भी हमारे गैर भाजपा शासित राज्य बार बार हमारे पेट्रोल और डीजल के महंगाई के बारे में वो जिक्र करते हैं, पर जब बात आती है तब वैट 1 रुपए भी उसमें कटौती नहीं करते हुए किस तरह उंगली हमारे सरकार के ऊपर बताने के लिए वो प्रयास करते रहते. But when it comes to the discussion on the inclusion of this petroleum products and taxes into the purview of GST, कोई भी हमारा विपक्ष के राज्यों में सहमत नहीं देते. बाहर तो बताते कि महंगाने के बारे में, मगर जब जीएसटी की परव्यू की बात आती है तो कभी उसका समर्थन नहीं की. ये तो सभी लोगों को जानकारी है. But when it comes to the point of bill, sir, it is natural that litigations and taxes go together. It is an unending fight between a taxpayer and a tax collector. Provision of dispute resolution mechanism in the statute is the key to such disputes. Tribunal is the second tier in the GST appeal mechanism. Due to litigation, the GST tribunals could not be so far constituted. Tribunal, being the highest fact-finding authority, must be the place where the disputes must end. The proposed amendment shows the government's commitment to ensure speedy justice to the taxpayers. इसके पहले जैसे बताया सुशील जी ने वन नेशन वन टैक्स के बारे में, आज not only it has helped the ease of doing business for the business people, and record collection of 1,67,000 crores. Hats off to
our Honorable Finance Minister and Modi ji's government, which is also a transparent and accountability. And have been seen from the government side, Madam Nirmala ji, the share of the states are being contributed on time without any delay. इसलिए I once again thank the government for giving an opportunity to good number of advocates to be part of this statutory authority. Madam, my suggestion from my side that chartered accountants with the same qualifications as that of advocates may also be considered for appointment as members of GST tribunals. As many CS have been successfully functioning as members of the income tax appellate tribunals, experience and expertise of CS in accounting procedures would be an added advantage on the benches of tribunal. So while congratulating the government for successfully implementing the GST law in our federal setup, I fully support this bill and I stand here to support this bill. Thank you, sir. Thank you, Dr. K. Lakshman ji. Mani Shri Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, this bill intends to align certain provisions of the Central Goods and Services Taxes Act 2017 with the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, I rise to speak in the favor of this bill. So the bill is also a testimony of the resolve of Honorable Prime Minister towards streamlining of rules. More than 1,500 redundant and obsolete laws have already been done away with. And with such measures, measures are in addition to the process of enhancing administrative efficiencies in reducing the workload and the caseload. So the GST has ushered in a new era of financial governance leading to enhanced financial administration. GST has not only widened the tax collection, but has also led to formalization of the Indian economy. From fragile 5 to top 5, the Indian economy has traveled a long distance in the last 9 years under this government. In 2013-14, our per capita income was 68,000, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores, and the Union government under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. Between 2004 and 14, tax collection was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. The GST collection has reached 1.87 lakh crores in April 23, and the monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were at 309 billion. They stand today at 593 billion. Today, the Indian stack enabling digital India is a focal point of global discussion. In financial year 23, over 103 billion digital transactions worth over 166 trillion Indian rupees of transactions across India. The number of transactions was estimated to rise up to over 411 billion by 2027 in the country, sir. These numbers are just mind-boggling. The world is flabbergasted at our success in the digital payment ecosystem. The robust new companies registration depicts strong growth intentions. Around 93,000 companies were registered in the first half of 23-24 as compared to the 59,000 5 years back. The average daily registration of new companies increased to 622 in 23-24, an increase of almost 58% from 395 in 18-19. All scheduled commercial banks' credit growth year on year has been accelerated since early 2022. Aggregate deposits grew by 13.2% and credit by 20% till September. In the coming months, we expect the credit demand to increase even further. Exceeding all expectations and predictions, India's gross domestic product has demonstrated a remarkable annual growth of 7.6% in the second quarter of financial year 24, building on a strong first quarter growth of 7.8%. The second quarter has outperformed the projections with a growth of 7.6%. The IMF in its recent report, very recently, sir, has applauded India's economic performance and has termed it as a star performer, contributing it to 16% of the global economic growth. It has lauded the country's digital public infrastructure and strong government infrastructure push for the sustained growth, and has projected India's economy to grow at 6.3% in the current fiscal year.
India has emerged as an outstanding performer among major economies, showcasing resilience in the face of global uncertain environment characterized by risks related to geopolitical conflicts, fluctuating energy prices, and concerns about a political or about a potential recession. This impressive milestone further substantiates the country's unique development paradigm, a paradigm that has been a hallmark of the Prime Minister Narendra Modi's government in the last 9 years, set to leave an inspiring trail for other developing nations to follow. So, the Honorable Prime Minister Modi is focused on building fundamental public infrastructure first, empowering individuals to act as agents of change. We have seen an approach in the government schemes like Saubhagya, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Ayushman Bharat, among others. Today, we have achieved 100% electrification of villages, while over 13.7 crore tap water connections make water available to 70% of our families from only 17% about a decade ago. So India is following a 4D model of development, democracy, and diversity. And the period till 2047 is one of the huge opportunities that Indians who are living in this era have a great chance to lay a foundation for the growth that will be remembered for times to come. For a long time, India was perceived as a nation of 1 billion hungry stomachs. But now India has been seen as a nation of over 1 billion aspirational minds, more than 2 billion skilled hands, and hundreds of millions of young people. So who are the beneficiaries of this rapid economic progress? I ask myself, and when I see around, it is the maids who come to our houses to assist us in our daily chores. Yes, they are the beneficiaries. Is it the gardeners? Is it the milkman and the vegetable vendors? Yes, definitely. Is it the drivers or the safai karamcharis? A big yes. Is it the watchmen in our offices? It is the employees in my firm, which I can personally vouch for. It is the ST, SC, women in the weaker sections of the rural India, which I travel to almost every other day. Sir, the economic progress has actually percolated down to the last person in the queue. And Antyodaya ka uday hua hai. Sir, I would like to thank the Honorable Finance Minister for addressing the concerns of the Honorable Supreme Court and being able to bring this bill to its culmination point. It is for the leadership and the vision of the Honorable Prime Minister that young Indians are thinking of coming back to India and not leaving India. The reverse brain drain, which is unheard, has begun. Modi is definitely a short form for man on development of India. Thank you, sir. थैंक यू कार्तिकेय जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, माननीय श्री अजय प्रताप सिंह, 4 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज ये जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उपसभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस बिल पर बोलने का तय किया है। इसके पीछे की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस बिल को इतना भयावह बताते हैं कि उन्होंने इसका नामकरण गब्बर सिंह टैक्स रखा है। मेरी समझ के अनुसार वो इस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि शोले पिक्चर में गब्बर सिंह नामक एक डाकू था जो लोगों को लूटता था, शोषण करता था। तो उनका आशय यही था कि ये टैक्स भी लोगों को लूटता है। इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इस टैक्स को जानूं, समझूं, आखिर जीएसटी है क्या। और इसीलिए मैंने इस बिल पर बोलने का निश्चय किया। और इस निश्चय के साथ जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसका अध्ययन किया और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो हमारे विपक्षी साथियों ने चाहे जो समझकर इसका नाम गब्बर सिंह रखा हो, लेकिन मेरी समझ के अनुसार गब्बर शब्द की उत्पत्ति गबरू से हुई है। गबरू को ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं जो हष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, ताकतवर हो। तो ये टैक्स वास्तव में गबरू टैक्स है। गबरू टैक्स इस मायने में है कि हमारी इकोनॉमी को ताकत देता है, हष्ट पुष्ट करता है, हमारे देश को मजबूत करता है।
तो चाहे उन्होंने जिस भाव से इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा हो, लेकिन ये टैक्स वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत फ्रूटफुल है। जीएसटी के इतिहास को मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई और 1954 में पहली बार फ्रांस में इसको लागू किया गया। और इसके प्रभाव का आकलन जब शन विश्व के अनेक देशों ने किया, तो सभी देशों ने इसको अपने देश में लागू करने का निश्चय किया। आज पूरी दुनिया में लगभग 140 देश इस जीएसटी की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया और कालेलकर कमेटी का गठन किया, जो जीएसटी के संदर्भ में इसको हिंदुस्तान में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेवारी उसे कमेटी को सौंपी गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट से किसी की असहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लागू करने का प्रयास किया। 2011 में तो एक यहाँ पर सदन के अंदर बिल भी लेकर आए, लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसके कारण उस बिल को पारित नहीं करा पाए। 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण 2016 में यह बिल एक संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ और 2017 में यह पूरे देश में लागू हुआ। और ये लागू करना आसान बात नहीं थी, बहुत सारी जटिलताएं थी। विश्व के जो दूसरे देश हैं जहां पर ये सफलतापूर्वक लागू हो रहा है, उनकी जो स्थानीय परिस्थिति है, उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है और भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत की जो आर्थिक संरचना है, उसमें काफी विभिन्नता है। इसके कारण एक बड़ी चुनौती थी। आदरणीय सुशील मोदी जी ने ठीक ही स्वर्गीय अरुण जेटली जी का स्मरण किया है। उन्होंने अपनी कुशलता और मेधा के साथ, अपने चातुर्य के साथ, लोगों को कन्विंस करने की पावर के साथ पूरे देश के अंदर जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारें थी, उनके प्रतिनिधियों को सहमत किया, एक टेबल पर बैठाया और आज परिणाम है कि ये जीएसटी पूरे देश में समान रूप से लागू है, सभी सहमत हैं। आदरणीय अरुण जेटली जी के पश्चात आदरणीय निर्मला जी भी इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। ये जो जीएसटी का एक्ट है, इसमें प्रोविजन है एक जीएसटी काउंसिल का, और जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। टैक्स के बारे में तो ठीक है, डिसाइड करती है, समय समय पर बैठती है, लेकिन अगर उसकी जो संरचना है, उस संरचना के बारे में अगर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचें तो हमारी देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है वो जीएसटी काउंसिल, हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। हम में वैचारिक स्तर पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन जहां देश की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश के कल्याण की बात आती है, देश को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो इस देश के भूभाग में रहने वाला व्यक्ति सच्चे और सही अर्थों में भारतीय है, और ये भारतीयता का प्रदर्शन करने वाली हमारी जीएसटी काउंसिल है। इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो प्रदर्शन है, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिए हैं, इस पर मैं उन सभी को, सभी साथियों, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसके, उन सभी को साधुवाद देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार ऐसी सरकार होगी जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस पे विचार पर कार्य करेगी। ये जो जीएसटी टैक्स है, इसी को चरितार्थ करता है। अभी आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए हम सभी को बताया है कि 17 केंद्रीय कर और 13 राज्य स्तरीय करों का समावेश इस जीएसटी टैक्स के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो टैक्सों की जटिलता है, ये समाप्त की गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इसको परिलक्षित करता है।
और ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी के माध्यम से बहुत सारी जटिलताएं समाप्त हुई हैं, व्यापार करना आसान हुआ है। इसकी बिल पर तो आया ही नहीं सर अभी मैं। अरे तो आपको मैं कहा था 4 मिनट समय था, आप 7 मिनट बोल चुके हैं, तो बिल पर बोलिए, बस 1 आध मिनट में बिल पर खत्म करिए। 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं बिल पे, इस बिल के संदर्भ में क्योंकि समय कम है तो मैं चर्चा करते हुए करना चाहता हूं कि ये बिल केवल भूल सुधार का बिल है। भूल सुधार का इस मामले में है कि जैसे आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए बात की है कि इसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है, विशेष रूप से जो द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का गठन करने के लिए जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है उसके प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, तो उस प्रावधानों के साथ संगत बैठाने के लिए ये बिल प्रमुख रूप से लाया गया है। इसमें केवल न्यायिक अधिकारी ही नहीं, जुडिशियल मेंबर के रूप में जो हमारे एडवोकेट हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। जो आयु सीमा है वो आयु सीमा के भी जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान हमारे इस बिल के अंतर्गत जो ट्राइब्यूनल बनेगा वो आयु सीमा के प्रावधान इसमें भी हो, जिसमें न्यूनतम 50 वर्ष हो और अधिकतम मेंबर के लिए 67 ईयर हो और जो अध्यक्ष है उसके लिए 70 वर्ष हो। इतना ही प्रमुख रूप से संशोधन इस बिल में किया गया है। बाकी कंपोजिशन की बात है जिसमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, अब विधि विशेषज्ञ हैं, राज्य के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि, इनका सभी का समावेश किया गया है। इतनी बातें करने के लिए इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिल जो है प्रमुख रूप से जो भूल हो गई है, जो छूट गया था, जो संगत नहीं बैठी थी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के साथ, उस संगत को बैठाने के लिए बिल लाया गया है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनकमेडल रविंद्र कुमार। Thank you to Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. I congratulate you. I'm seeing in the first time in the chair, Deputy Chairman, as Deputy Chairman. Sir, the Central Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2023, sir, this Act provides for levy and collection of CGST on the intrastate supply goods and services. Sir, mainly the bill proposes to amendment to Section 110. Change in qualification of members of appellate tribunal and also age limit. Changing with regard to the qualification, the eligibility criteria, a judge of the High Court, district judge or additional judge, or the bill allows the advocates also who have 10 years experience as judicial member. Sir, I request the Honorable Finance Minister, instead of relaxing the age limit and extending the age limit, several advocates have been practicing in tax sites also. Practicing advocates may be considered as a judges of or the judicial members of the tax tribunals and appellate tribunal, because they are also equivalently able to discharge their functions being a practicing advocates. Sir, there are so many vacancies in the tribunals that have to be fulfilled. For the last several times, the Honorable Supreme Court also pointed out with regard to fulfilling the vacancies. If it is vacancies are filled up, then the pendency also will be reduced. Advocates and also chartered accountants also can be given this opportunity. Sir, with regard to the disposal of the cases, more benches and tribunals also can be constituted for this purpose. Sir, my senior colleague, Thambi Duraisi, as I already explained to the House, in respect of the conditions in the state of Tamil Nadu. I do not know with regard to the conditions of Tamil Nadu, but I, being a member of from the state of Andhra Pradesh, the present conditions of in Andhra Pradesh is very pathetic than Tamil Nadu. But the conditions, the reason is several crores of rupees are disbursing by the central government to the state government. The state government is diverting the funds. Instead of they are misusing the funds, increasing the taxes, and not only increasing the taxes, common man has been suffering.
In respect of petrol and diesel, they have increased taxes. They did not reduce the VAT. When compared with the neighboring states, Karnataka and Tamil Nadu, there is a difference of rupees 10 to 15 rupees difference per liter. It has to be considered the petrol and diesel also it is advisable, rather desirable, it is high time to bring into the fold of the GST. Otherwise, the state government people, the people of Andhra Pradesh have been suffering since long time. In addition to that, most of the funds which were, dispersed to the state government have been diverted and misappropriated and misused by the state government. For the present state government debt is more than 11 lakhs. Not only that, apart from that, sir, the Andhra Pradesh government is now even yesterday also they have taken a loan of 5,880 crores by exceeding FRB limits. Ultimately, the people of Andhra Pradesh will be burdened, huge burden. In addition to that, the prices have been increased in day in, day out. There is no control. There is no financial management. Financial anarchism is going on in Andhra Pradesh. So, in view of these present circumstances, I urge the central government to, in view of the, sir, I urge the central government, I request to at least, it is not my statement, sir. The Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, and Honorable Finance Minister, during their visit to Andhra Pradesh, they have pointed out about the financial misappropriation and financial anarchism in the state of Andhra Pradesh by the state government. In view of the present scenario, I request the Honorable Central Government and the Honorable Finance Minister to conduct an inquiry about the financial misappropriation in the state of Andhra Pradesh, and with regard to the diversion, particularly diversion of funds, if there is no accountability. The COG also, sir, finally, the COG also has pointed out huge irregularities of the state government. Till now, they did not shoot to give any answer to the COG also, that itself shows financial misappropriation in the state of Andhra Pradesh. Okay. Thank you, sir, for giving this opportunity. Shri G.K. Vasanji. Sir, this is a very important bill, sir. My party, Tamil Manila Congress, Mupanar, supports this bill, sir. Sir, economy of our country after COVID-19 has been steadily growing, and each and every business in the country is developing, from the village to the town, sir. Poor and needy of this country get their share and are helped by Garib Kalyan Yojana, sir. Sir, record collection of GST is the need of the hour for the country, sir. At the same time, sir, when the state governments are pressurizing the central government, requesting for the GST, sir, as the finance ministry say, I would only request them to follow the guidelines, sir, properly, so that they get the share of the GST in the right time, sir. Sir, Ministry of Finance not only plays a role for the development of the state and the country, it plays a very important aspect and role at the time of nature's fury and when calamity takes place in the states. Sir, 4 days back, unprecedented rain in Tamil Nadu, sir, southern districts, especially Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi, and Kanyakumari, sir. Even today, after 3-4 days of the rain, rescue operation is going on, sir, which is mainly carried by the central government team, NDRF, with the state government agencies, sir. Sir, towns and villages are reeling under water. 15 days back, we had the same nature calamity in Chennai and suburbs, sir. I thank the central government and the finance ministry at this juncture, sir, that they were very kind enough. Quickly they helped the Chennai and suburban people for a immediate revival, sir. Sir, yesterday evening, before the Chief Minister of Tamil Nadu was in Delhi for an alliance
meeting of his party in Delhi could reach Tamil Nadu, the central team from the Home Ministry and the central team which has gone there for seeing the rain hit areas and to assess to the Finance Ministry has reached the spot, sir. Yesterday, the Finance Minister told me that 12 helicopters were sent immediately to Tamil Nadu. Even today, NDRF team is the main team which is helping the people of the southern districts, sir. Sir, to conclude, I would like to say, yesterday the Chief Minister was here, met the Prime Minister after his alliance meeting was over, and requested the Prime Minister to give money to the state of Tamil Nadu to southern districts, sir. I would request the central government to assess the situation as early as possible, sir, and help the people of southern Tamil Nadu, sir, so that they get back to normalcy at the early, sir. With this, I support this bill. Thank you very much, sir. Thank you. Srimati Ramilaben Bachurbai Bera. ધન્યવાદ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી. જીએસટી ની અદ્ભુત સિદ્ધિ માટે દેશના વડાપ્રધાન માન્ય મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જીએસટી ભારતનો સૌથી મોટો ટેક્સ રિફોર્મેશન છે. જીએસટી પહેલા આપણા દેશની અંદર લગભગ 15 થી વધારે અપ્રત્યક્ષ કર હતા, જેનું ભારણ પ્રજા ઉપર હતું. પ્રજા ત્રાહિમામ હતી. પરંતુ જીએસટી આવવાથી બધાનો એક જ વન નેશન વન ટેક્સ લાગુ થઈ ગયો, અને એટલા માટે હું દેશના વડાપ્રધાન અને વિત્ત મંત્રી નિર્મલા સીતારામજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. માન્ય સભાપતિજી, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ IMF ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડનો રિપોર્ટ આપ્યો છે. એ રિપોર્ટમાં વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારત પ્રથમ નંબરે નો એમના રિપોર્ટમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, અને એટલા માટે હું ધન્યવાદ આપું છું. માન્ય સભાપતિજી, જીએસટી દેશના વિકાસની સીડી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. જીએસટી આવવાથી 15 થી વધારે જે નાના મોટા અપ્રત્યક્ષ કર હતા એ વિલીન થઈ ગયા, સમાપ્ત થઈ ગયા, સરળીકરણ થયું. એટલું જ નહીં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, બીજો ફાયદો એ થયો કાસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ, યાને ટેક્સ ઓન ટેક્સ સમાપ્ત થઈ ગયો. એટલે સૌથી વધારે ફાયદો પ્રજાને, એ સમસ્યાનું સમાધાન થઈ ગયું. એટલું જ નહીં, વેરા શાખને મોટો ફાયદો થયો, અને વેરા શાખને ફાયદો થતા વસ્તુ જે માર્કેટમાં આવી એ માર્કેટની વસ્તુ ઓછા ભાવે પ્રજાને મળવા લાગી. આ જીએસટીના કારણે ફાયદો થયો, અને ગ્રાહકને ખૂબ સરળતાથી ઓછા ભાવે વસ્તુ મળવા લાગી. મને સભાપતિજી, હું જીએસટી પર ગર્વ અનુભવું છું, કારણ કે જીએસટી આવવાથી લોકો સામે ચાલીને સરકારમાં વિશ્વાસ બેઠો અને પોતાનો કર સામે ચાલીને ભરવા ગયા. મને સભાપતિ, ભૂતકાળ તરફ નજર કરીએ આપણે તો ભૂતકાળમાં ટેક્સ ભરવા માટે અગાઉની સરકારોએ કેટલી બધી લાલચ, લોભ, સ્કીમો મૂકવી પડતી, તો એ લોકો ટેક્સ ભરવા માટે આગળ નતા આવતા. પણ આજે જીએસટી આવવાથી લોકોને સરકારમાં વિશ્વાસ બેઠો છે, ભરોસો બેઠો છે, અને એટલા માટે ટેક્સ સામે ચાલીને લોકો ભરવા જાય છે. મને સભાપતિજી, આ જીએસટી આપણા 2017માં લાગુ થયો, અને હમણાં લાસ્ટ નાણાકીય વર્ષના આપણે આંકડા જોઈએ, 2022, 2023 અને 23-24 ના આંકડા તમે જોશો
પ્રત્યેક વર્ષે જીએસટી પોતાના જ હરીફાઈ કરી રહ્યું છે. લગભગ 22 થી 23 માં 11% વધારો થયો છે. આંકડા તમે કલેક્શન આંકડા જોશો તો ક્રમશઃ વધારો જ જોવા મળે. એટલું જ નહીં, પ્રત્યેક રાજ્યો, આપણે હિમાચલ છોડીએ અને મણિપુર રાજ્ય છોડી દઈએ, બાકીના તમામ સ્ટેટોમાં કલેક્શન આંકડા ખૂબ ઊંચા આગળ વધ્યા છે. એ જ અર્થ બતાવે છે કે જીએસટી કેટલું લોકોએ એનામાં વિશ્વાસ બેઠો છે. જનતા જ નહીં, વેપારીગણ, ઉદ્યોગપતિઓ બધાએ જીએસટી ને સ્વીકાર્યો છે. અને માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, હું વાત કહીશ આપને કે જીએસટી ના કારણે મોદી સરકાર ગરીબો, વંચિતો અને છેવાડાના માનવીને એની યોજનાથી એમને લાભ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. અને છેવાડાના માનવીને ગેસનું કનેક્શન આપ્યું છે, પોતાના ઘરનું ઘર આપ્યું છે, વિશ્વ કક્ષાના હાઈવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને દુર્ગમ વિસ્તારોમાં દરેક ઘરમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં મોદી સરકાર સમર્થ રહી છે, બીકોઝ જીએસટી ની આવક. અને આ માટે માન્ય સભાપતિજી, નારી જગત વતીથી હું મોદી સરકારને વંદન કરું છું. એટલું જ નહીં, જીએસટી આવવાથી લોકોને ટેક્સ ભરવામાં ક્યાંય કચકચાટ થતી નથી. અને એટલું જ નહીં, આજે આપણે જોઈએ છે માન્ય સભાપતિજી, પ્રત્યેક સેક્ટરોમાં આપ વિકાસ જોઈ શકો છો. અને હમણાં તો છેલ્લા મહિનાથી મોદી ગેરંટી વાળી, વિકસિત ભારત વાળી ગાડી પ્રત્યેક છેવાડાના ગામ સુધી જઈ રહી છે. એટલું જ નહીં, ગાડી જઈ રહી છે એટલું જ નહીં, આમ વિવિધ યોજનાઓ છે, એ યોજનાઓના લોકો સુધી પહોંચે, લોકો લાભ લે, એ માટે સરકાર એમને ઢંઢોળીને જગાડીને ઉઠાડીને લાભ આપવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. એટલે માન્ય સભાપતિજી, માન્ય નિર્મલાજી, જે જીએસટી બિલ લઈને આવ્યા છે સૌના માટે કલ્યાણકારી છે. સૌ એટલા માટે હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ. नेक्स्ट श्री घनश्याम तिवारी जी. माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये 10 साल का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल विभिन्न सुधारों के लिए याद किया जाएगा. और उन सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार ये जीएसटी का भी सुधार है. उपसभापति महोदय, सबसे पहला 4 बड़े संविधान संशोधन इस सरकार ने किए. पहले न्यायिक आयोग बढ़ाने का संशोधन किया, दुर्भाग्य से उसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया. उसके बाद जीएसटी का संशोधन हुआ, ईडब्ल्यूएस का संशोधन हुआ और ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का संशोधन हुआ. ये सारे संशोधन इस बात का प्रतीक है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत कर आम जनता को राहत दी जा सकती है. उसमें सबसे पहला काम यह है कि जीएसटी का कानून संविधान संशोधन कर 101वां संविधान संशोधन के अंदर जो बना, इसको बनाने में कितनी दिक्कत थी. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक, और उसके बाद में इसको सारे राज्यों को सहमत करके, सारे राज्यों की काउंसिल बनाकर और सबको एक साथ लेकर संपूर्ण देश ने इस कानून को स्वीकार किया. इससे बड़ा काम आर्थिक क्षेत्र में और टैक्सों के सुधार में नहीं हो सकता था, जो काम इस जीएसटी के माध्यम से हुआ. और सही कह रहे थे माननीय अपने भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो बिहार के थे, उन्होंने सही कहा कि श्रीमान अरुण जेटली जी ने इसमें महत्वपूर्ण काम किया और वह संशोधन हुआ. सभापति महोदय, मैं जानता हूं जब इस पर लोकसभा राज्यसभा के बाद में जब विधानसभा में इसकी चर्चा हुई, तो मैं राजस्थान की विधानसभा में था. तो राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करते समय एक भूतपूर्व जागीरदार थे जो माननीय सदस्य थे, उन्होंने भाषण देते हुए कहा
कि जिस प्रकार से हमने हमारी राज्यों को और जमींदारों का परित्याग किया था, उसी प्रकार से राज्यों ने अपने टैक्स लगाने के अधिकार को परित्याग करके संपूर्ण देश में एक राष्ट्र, एक देश और एक कर के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह भारत की राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ा सहयोग करने वाला कदम था जो उठाया गया, उन्होंने शब्दों में कहा था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानता था जब सेल्स टैक्स और इनके इंस्पेक्टर जाते थे लोगों के पास और वो जाकर जिस प्रकार से वसूली करते थे, तो उसके दो मापदंड थे, कितना टैक्स और कितना जेब का टैक्स। कुछ टैक्स तो सरकार के लिए देते थे और कुछ टैक्स उनकी जेब के लिए देते थे। और जयपुर में तो उपसभापति महोदय 2-3 कॉलोनियां बन गई। एक कॉलोनी का नाम है इनकम टैक्स कॉलोनी, एक का नाम है सेल्स टैक्स कॉलोनी। जो एक बार सेल्स टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया और जो इनकम टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया। और इस टैक्सों के कारण से आम आदमी पीड़ित था। उस सारी पीड़ा को समाप्त करने का काम इस जीएसटी ने किया। इसके लिए हमारी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र। सभापति महोदय, इसके अंतर्गत अब जैसा कि ये भी कहा गया कि 1,67,000 करोड़ रुपए आ रहा है और उसमें राज्यों के पास भी जा रहा है। और राज्यों को अब टैक्स कलेक्शन में कोई जिम्मेदारी प्रमुख रूप से नहीं है। उनको एक बंधा हुआ पैसा जो है उनको मिलता है और भारत सरकार की व्यवस्था कारण से मिलता है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और वो काम हुआ है। लेकिन इसमें दो बड़े काम हैं जो काम इसके बाहर रह गए। एक तो आबकारी का टैक्स था, वो रह गया, और एक पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स रह गया। अब भारत सरकार बार बार प्रयत्न करती है, लेकिन विपक्ष की जितनी सरकारें हैं वो सरकारें इस प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों वाले टैक्स को वेट को जीएसटी को कम करने के लिए तैयार नहीं है और उसको जीएसटी के अंतर्गत देने के लिए तैयार नहीं। वो इसलिए तैयार नहीं है कि सबसे ज्यादा जब राजस्थान में भी चुनाव हो गया, अब तो सरकार बदल गई, पर राजस्थान में जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा वेट जो सबसे ज्यादा था वो लगा हुआ था पेट्रोलियम पर, इन पर। अब हमारी सरकार उसमें आगे निर्णय करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो काम है, अगर भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी कीमतों को भी कम करना है और उन पर एक सा कानून करता है, तो मैं माननीय निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वभाव, निर्मल स्वभाव से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर इस पर भी अगर सहमति बना लेते हैं तो ये उसी प्रकार का काम होगा जिस प्रकार से जीएसटी को लागू करने के लिए रात को 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाया गया था और 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर जिस प्रकार आजादी के समय घंटा बजाया गया था, उसी प्रकार के घंटे बजाकर जीएसटी को लागू किया गया था। उस जीएसटी में कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये धारा 109 और 110 का संशोधन कुछ न्यायिक कारणों से और कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, पहला जो प्राधिकरण है वो केवल अधिकारियों के द्वारा है, लेकिन दूसरा जो प्राधिकरण है उस प्राधिकरण में न्यायिक लोग भी होंगे, उनकी उम्र को बढ़ाने का भी प्रावधान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्वागत योग्य है और ये सारी भूमिका रही है भारत के आर्थिक उन्नति में। जो सबसे बड़ा एक सहायक बना है वो बना है जीएसटी का कानून और उस कानून पर आज संशोधन आया है। मैं इसको स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बॉन्डे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज सेंट्रल जीएसटी के ऊपर जो सेकंड अमेंडमेंट है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं और सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से एक नया आर्थिक परिवर्तन हमारे भारत देश में आया है और उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारमन इनका अभिनंदन करता हूं। अभी जब लास्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था
जीएसटी आने के पहले, तब 36,000 करोड़ पर मंथ टैक्स आता था और अभी 1,67,000 लाख करोड़ टैक्सेशन भारत को मिल रहा है। और उसके माध्यम से आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को जो भोजन देने का, अन्न देने का गरीब कल्याण निधि का काम भी हो रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, कोई गब्बर सिंह टैक्स बोले, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि ये गरीब सहायता टैक्स है। जीएसटी यानी गरीब सहायता टैक्स है। ऐसा भी बोला जाता था जब जीएसटी लगा था कि जीएसटी लग गया कि जीएसटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ रेट। जीएसटी जहां जहां लगा वहां वहां ग्रोथ रेट कम हुआ, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते थे। लेकिन ये भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार ने कोविड आने के बावजूद, जीएसटी लगाने के बाद भी ग्रोथ रेट कायम रखा और निरंतर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है कि अब इकोनॉमी का इंजन ही भारत हो रहा है। पूरी दुनिया का इकोनॉमी का इंजन ही भारत हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस जो करते हैं, व्यापारी जो करते हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की थी और महीना लगा रहता था, यानी कौन से दिन उसका राउंड होने वाला है उस दिन जमा करके रखना पड़ता था उसकी शांति करने के लिए। ये सब बंद हो गया। पहले कुछ महीनों में व्यापारियों को भी लगा कि हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा, कैसा हम सीखेंगे, हम ऑनलाइन कैसा भर पाएंगे। आज इसमें तो मैं बोलता हूं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। हर दुकान में एक कंप्यूटर ऑपरेटर या एम्प्लॉयमेंट, उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी मिला। लेकिन ये बात भी सही है कि व्यापारी और जीएसटी के जो अधिकारी रहते हैं या जीएसटी भरने का जो प्रोसीजर है, उसमें डेफिनेटली कुछ वक्त डिस्प्यूट निर्माण होता है। अब ये डिस्प्यूट अप्रेजल भी जरूरी है। ये डिस्प्यूट अप्रेजल करने के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट तक जाओ और हाई कोर्ट में सालों तक उसका रिजल्ट ना लगे, यह तो बिजनेसमैन के ऊपर अन्याय है। और उसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यह न्याय देने की एक प्रक्रिया है। और जो ट्रिब्यूनल का रिफॉर्म 2021 में किया गया, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट तथा ट्रिब्यूनल के सदस्य, वो टेक्निकल रहे या जुडिशियरी रहे, वो निर्माण करना भी जरूरी था। तो उसके बारे में प्रावधान करने के लिए बिल लाया। लेकिन इसमें थोड़ा सा सजेशन करने की मैं हिम्मत करता हूं कि स्टेट ट्रिब्यूनल है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट सबसे ज्यादा जीएसटी देता है और इतना वाइड स्टेट है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यानी संभाजीनगर और तथा नागपुर, तो इसलिए एक स्टेट ट्रिब्यूनल महाराष्ट्र में काफी नहीं होगा। इसलिए नागपुर, संभाजीनगर, पुणे और मुंबई ऐसे 4 स्टेट ट्रिब्यूनल रहे तो वहां के जो बिजनेसमैन हैं उनको अपील करने के लिए सुविधा निर्माण होगी। दूसरा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ, कि कंज्यूमर कोर्ट है। अब कंज्यूमर कोर्ट में जो भी ग्राहक को सेवा देता है और ग्राहक अपील करता है, ग्राहक अपील करने के बाद में यह जरूरी नहीं है कि ग्राहक कोई एडवोकेट अपॉइंट करे। ग्राहक भी खुद की साइड वहां पे सबमिट कर सकता है, खुद को प्लीड कर सकता है और उसके वजह से उसका जो खर्चा है वो भी एडवोकेट के ऊपर, वकील के ऊपर वो बचता है और बड़े अच्छी तरह से उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसके जो ग्रीवेंसेस है, वो ट्रिब्यूनल के सामने वो रख सकता है और उसको न्याय मिलने की संभावना अच्छी होती है। मेरी यही विनती है कि इसमें भी कंज्यूमर कोर्ट के समान, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल के समान बिजनेसमैन को खुद को प्लीड करने का राइट भी दिया तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। उनको एडवोकेट लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी और उसके वजह से एक बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि काम हो सकेगा। तीसरा एक इम्पोर्टेंट है कि सर,
यह बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे देखा जाता है कि हलाल सर्टिफाइड है क्या। ये कौन सा टैक्स है हलाल का? हम जीएसटी भर रहे हैं, हम पूरे देश के नागरिक हैं, वन नेशन वन टैक्स है, और ये हलाल के माध्यम से भी कई जगह पे शोषण हो रहा है। इस माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि हलाल जहीं पे भी लगता हो वो हलाल को भी बंद किया जाए, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बिल के लिए अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, आज ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर, संशोधन विधेयक पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। महोदय, सरकारें इकबाल से चला करती हैं, विश्वसनीयता से चला करती हैं। ये प्रयास जीएसटी लगाने का बहुत पहले हुआ। जिस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी जीएसटी लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन राज्य सरकारों का विश्वास नहीं था भारत सरकार पर, और इसके चलते कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस समय वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय जेटली साहब ने इस दिशा में प्रयास किया और तमाम राज्य सरकारों से वार्ता करके जीएसटी काउंसिल का गठन करके, जिसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, और उनके साथ बैठकर लंबी वार्ता करके उनके मन में जो भ्रांतियां थी, जो संदेह थे, उनका निराकरण करके एक सहमति बनाने का काम किया। तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, अलग अलग विचारधारा की सरकारें थी, और जो जिनको एक मंच पर लाना और एक टेबल पर बैठ करके समाधान निकालना एक बड़ी बात थी। लेकिन इस सब के पीछे था इकबाल, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इकबाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल। लोगों को यह विश्वास था कि मोदी जी जो कहते हैं उसे निभाने का काम करते हैं, और जो भी वायदा करेंगे जीएसटी काउंसिल में, हमारे वित्त मंत्री उसको सरकारें पूरा करने का काम करेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि 2017 में जीएसटी का गठन हुआ, और जीएसटी को देश ने अंगीकार किया, और तमाम राज्यों ने जीएसटी के अंतर्गत अपने को सहमति प्रदान की, और उस दिन सारे देश में एक देश और एक कर की व्यवस्था लागू हुई। लंबे समय से इसकी स्थापना की चर्चा थी, चिंता थी, और देश चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हुआ। मान्यवर, आज देखें, आज जो टैक्स कलेक्शन हमारा है जीएसटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ से ज्यादा 2022-23 का जो टैक्स कलेक्शन है वो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। और इस तरह से निरंतर आने वाले वर्षों में जो आज हमने 1,67,000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया इस महीने में, आने वाले वर्ष में मैं समझता हूं 2 लाख करोड़ एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन होने की उम्मीद है। इस तरह से अगर देखा जाए, हमारी तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो आज भारत सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क भोजन देने की बात हो, चाहे 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि, ये सारी चीजें हम लोग कल्याण की तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास करदाताओं के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर आ रहा है, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। मान्यवर, इस संशोधन के आने से ये कोई ऐसा बड़ा संशोधन नहीं है। 2017 में जीएसटी कानून बनने के बाद 2021 में ट्रिब्यूनल के इस पर संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रिब्यूनल का गठन है इसमें अशुद्धियां हैं और इसको संशोधित करने के लिए कहा गया। तो 2021 में इसके बाद ये अपेक्षा की गई कि हम इसको संशोधित करके, तो आज जो ये हम लेके आए हैं, जो हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी जो विधेयक लेके आई हैं, बिल लेके आई हैं, वो उसमें केवल ये संशोधन होना है कि चेयरमैन की आयु जो 67 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 70 वर्ष करने का, सदस्यों की आयु जो 65 वर्ष थी उसे बढ़ा के 67 वर्ष करने का, और अगर इनकी पुनर्नियुक्ति होती है तो 2-2 साल की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो हमारे इसमें न्यायिक सदस्य होंगे उनको कम से कम 10 साल का कोर्ट का अनुभव हो, और टैक्सेशन की प्रैक्टिस उन्होंने की हो, चाहे उच्च न्यायालय में की हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, और उसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक हो। तो ये सारे प्राविधान करने का काम किया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा
इस सेंट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के बाद हमारे तमाम सारे राज्यों के ऊपर जो तमाम बोझ होता था, एक सेकंड अपील का अवसर मिलेगा। जो राज्य ट्रिब्यूनल है उनके मामलों के बारे में अभी तक केवल एक रास्ता था कि हाई कोर्ट में अपील किया करते थे, और जिसके चलते तमाम जीएसटी के मामलों के कारण हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के बनने के बाद करदाताओं को एक दूसरी अपील का भी अधिकार होगा कि स्टेट ट्रिब्यूनल के बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकेंगे, और कोर्ट पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा। इसलिए महत्वपूर्ण विधेयक है, और मान्यवर इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से करदाताओं को भी सुविधा होगी और तमाम सारे मामलों का जल्दी समाधान हो सकेगा, न्याय भी लोगों को जल्दी मिल सकेगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं सदन से इसको सर्वसम्मत से पारित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल। धन्यवाद उपसभापति जी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 23 और प्रोविजन ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस बिल 23 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय, इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, और उसके परिणाम भी जो उन्होंने सुधार किए हैं दिखने लगे। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की अर्थव्यवस्था संभाली तो ये 10वें नंबर की थी और आज 5वें नंबर पे आई है। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस थे। उस टैक्स के मकड़ जाल में ही व्यापारी फंसा रहता था और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचता नहीं था, और टैक्सेस का इतना बड़ा जाल था, वो चाहता था कि टैक्स ईमानदारी से जमा करें, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था थी कि वो टैक्स भी ईमानदारी से जमा नहीं कर पाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लाकर इस देश के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, और उनके इस योगदान को व्यापारी कभी भी भुला नहीं सकता। और इस उनके जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसी का नतीजा है कि आज जीएसटी कलेक्शंस इस कदर बढ़ रहा है, और उन कलेक्शंस से देश के गरीबों का भला हो रहा है, दलितों का भला हो रहा है, वंचितों का भला हो रहा है, देश के हर वर्ग को उसका फायदा मिल रहा है। एक दिक्कत व्यापारी महसूस कर रहे थे कि इस देश में जो जीएसटी के बढ़ते मुकदमे हैं वो एक चिंता का विषय थी, और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, उनकी आयु कम थी, जल्दी रिटायर होते थे, और इसमें बहुत सारे पद रिक्त थे। इस मामले में बहुत सारी व्यवस्थाएं बीच बीच में आई। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, जो हमारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 था, उसका भी हवाला दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी जो ये बिल लाई हैं, ये उन्हीं के लाइन में है, और उन्हीं लाइनों से उस प्रकार के अमेंडमेंट से देश के व्यापारियों का भला होने जा रहा है। बढ़ती हुई संख्या जो मुकदमों की थी, जो अपील्स की थी, वो निश्चित रूप से व्यापार को हर्डल कर रही थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जहां 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, आने वाले समय में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है, और उसके लिए आवश्यक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और उसमें अगर मुकदमे देर से तय होंगे तो निश्चित रूप से जो व्यापारी को अपना व्यापार करने में, अपनी पूंजी बढ़ाने में, टैक्स सही देने में दिक्कत आती थी, वो नहीं हो पाती थी। इस बिल के माध्यम से जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रोविजन किए हैं, चेयरमैन की आयु 67 से
70 करने का प्रोविजन है और 65 से 67 मेंबर का करने का प्रोविजन है। और इसमें एक जो बड़ी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाई है, इसमें एडवोकेट्स को भी मेंबर बनने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से जब हमारे संख्या बढ़ेगी मेंबर्स की, तो जितने भी अपील हैं वो जल्दी तय होंगी। एडवोकेट्स के लिए 10 ईयर का अच्छी उनकी ख्याति के साथ होना और 50 वर्ष की मिनिमम आयु होना आवश्यक है। और जब ट्रिब्यूनल्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और मेरे कुछ साथियों ने, जो विपक्ष आज यहाँ खाली बैठा है, जीएसटी लागू करने में जितने भी रोड़े अटका सकते थे वो रोड़े अटकाए हैं। मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो एक व्यापारी मित्र ने ही मुझे कुछ सुझाया, मैं आपके सामने वो बोलना चाहता हूं। यूपीए लूट रहा था देश और प्रदेश में, इसलिए नहीं चाहता था जीएसटी देश में। जीएसटी बना है वरदान देश में, इसलिए अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इस देश में। व्यापारी जीएसटी बढ़ा रहे मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी भी भला कर रहे हैं गरीब, दलित, पिछड़ों, महिलाओं का इस देश में। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रकाश जावड़ेकर। समय की सीमा कुछ नहीं, आप बोलिए जितना। कितना है? उपसभापति महोदया, जीएसटी एक आधुनिक भारत में हुई क्रांति है। इसके अनेक विशेषताएं, मैं 5 विशेषताओं को चिन्हित करूंगा। पहली विशेषता ये कि ये सभी राज्यों ने इकट्ठा आकर बनाया हुआ कानून, तय किए हुए रेट और तय किए हुए नियम, ऐसा कानून पहली दफा बना है। केंद्र सरकार अपने कानून करता है, राज्य सरकार अपने कानून करता है, लेकिन सभी राज्य इकट्ठा आकर यह कानून बना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उसमें बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, डीएमके है, सीपीएम है, वाईएसआरसीपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। देश के सभी राजनीतिक दल बाहर कुछ भी बोले, इकट्ठा आकर यह कानून तैयार हुआ, इकट्ठा आकर उसके नियम बने, इकट्ठा आकर उसके रेट तय हुए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अद्भुत नमूना है और इसलिए हमें गर्व होना चाहिए इस जीएसटी पर। और अरुण जी का स्मरण सभी करते हैं कि सभी राज्यों को साथ लेने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो ये पहला विशेष है। जीएसटी काउंसिल ये दूसरा विशेष है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य है, लगभग हर महीने 2 महीने में मीटिंग होती है, सभी वित्त मंत्री आते हैं, बाहर आके कुछ भी बयान दे, लगभग 90% डिसीजंस यूनानिमसली हुए हैं। इसमें मेजॉरिटी की प्रोविजन है, लेकिन निर्णय यूनानिमसली हुए। इतनी पारदर्शिता केंद्र सरकार ने रखी, इसीलिए ये इस तरह के निर्णय एकजुटता से हुए। तीसरा है कि इससे सबसे जो बड़ा मुद्दा था कि 30-40 कर वो एक हो गया, तो उससे पूरा लोगों की तकलीफ समाप्त हुई। और एक पहलू है जिस पर ध्यान नहीं ज्यादा जाता। मुझे एक दिन शाहपुर जी पालन जी के मुखिया मिले, तो वो कह रहे थे कि हमारे 30,000 वेंडर्स हैं, लेकिन 6,000 ही रजिस्टर्ड थे।
अब जीएसटी में एक जादू आई है, इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट के मिलने के लिए अब सबको लाइन में लगना ही पड़ता है, सर्कल में आना ही पड़ता है। तो अब 6,000 जहां थे वहां 30,000 हो गए। तो टैक्स का हिसाब दिया मोदी जी ने, देश को अकाउंटेबल बनाया और आसान भी बनाया। ये मोदी जी के राज की विशेषता है और जीएसटी उसका उदाहरण। तो इसलिए और दो चीजें है ही कि स्टेट जीएसटी का तुरंत क्रेडिट राज्य को मिलता है, तुरंत 1 मिनट में। तो ये पहले कभी नहीं होता था। केंद्र से कुछ आना है तो कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कांग्रेस के जमाने में। लीकेजेस सारे बंद हो गए क्योंकि अब लुका छपी कोई नहीं कर सकता। अब बात सीधी हो गई कि हर एक कोई अपना टैक्स भरेगा तो उसको आगे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये चेन चलती रहेगी और फाइनली जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो सरकार को मिलेगा और इसका कलेक्शन भी बढ़ रहा। 1,60,000 करोड़ हर महीने, यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए साल भर में केवल इसी एक टैक्स से मिल रहे हैं। और ये सबसे पारदर्शी, दुनिया की सबसे आसान सिस्टम बनी है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे दूसरा एक उसकी विशेषता लगती है कि कंटिन्यूअस रिफॉर्म हुए हैं। निर्मला जी ज्यादा बताएगी कि कितनी बार हर एक हमें सभी मंत्रियों को भी उस समय सभी राज्यों में भेजा था, व्यापारी और जो टैक्स देने वाले हैं उनसे चर्चा करने के लिए कि उनके क्या सुझाव है। सुझाव मांगने के लिए दरवाजे में जाने वाली ये पहली सरकार, और सुझाव लिए और उस दुरुस्त भी किए। आज भी यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, इसीलिए जीएसटी पर लोगों को गर्व है। मैंने 4 दिन पहले ही वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स मेरे पास आए थे पुणे में, तो उन्होंने एक जीएसटी में क्या सुधार होना चाहिए और भी, और एक क्या अभी की प्रोविजन है उससे क्या परिणाम हो रहा है, क्या करने से कैसे ठीक होगा, ये अच्छी तरह से लिख के दिया। ये सुनने वाली सरकार है और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जीएसटी जैसे टैक्स सुधार ये देश को बल देते हैं। ये सुधार आम सुधार नहीं है। और खासकर मैंने देखा है कि टैक्स के बारे में कभी एक राय नहीं होती। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में ये मनरेगा जो आज है वो पहले हमारे यहाँ रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी 72 के अकाल में। तब प्रोफेशनल टैक्स लगाया था जो ज्यादा कमाते हैं उन पर। वो प्रोफेशनल टैक्स एक टैक्स था जो उदाहरण की सभी पार्टियों ने एक साथ तय किया और सर्वसम्मति से पास हुआ। ये कानून ऐसा ही हो गया और इसलिए जीएसटी ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार में, पारदर्शिता लाने में। और पारदर्शिता के साथ एक लोगों को आश्वस्त करने का कि ये पैसा आपका आया, आपको भी तसल्ली होगी कि कोई हेराफेरी नहीं है। जीएसटी के कुछ केसेस होते हैं जिसमें कोई अधिकारी गड़बड़ी करते हैं तो बीच बीच में उनकी भी छानबीन होती है और ऐसे अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। तो ये एक सुदृढ़ प्रशासन का परिचय है।
और इसलिए मेरा मानना यह है कि जीएसटी जैसे कानून, जैसा तिवारी जी ने कहा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कानून जिसे संविधान संशोधन करना पड़ा, लेकिन वो इसलिए माइलस्टोन है कि जैसे ईबीसी का ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य है कि आज तक एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता, लेकिन जो अन्य समाज में भी गरीब है उनका क्या? तो गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले, ये पहली दफा हुआ कानून, और लोगों ने सहर्ष स्वागत किया, स्वीकार किया, सभी समाज उसमें आते। और इसलिए इस तरह के जो सुधार हुए हैं मोदी सरकार में, उसमें एक बेहतरीन पहलू है जीएसटी। यह हमेशा याद रहेगा और लगातार इसमें सुधार होता रहा है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि नहीं तो फिर वहां अटक जाता है। लेकिन यह हर एक को अब सुकून है कि हमें अगर कोई अनुभव आया, गलत आया, शिकायत है, तो शिकायत करेंगे, उसका सुधार होगा। तो ये इस कानून के सारे पहलू है, जो विशेष पहलू थे मैंने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, कि उनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल पेश की है। और आज सुबह जब मैं सवेरे हमारी नींद खुली तो मैं बधाई फिर से देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को। तो अखबार के, दुनिया के अखबारों में एक सुर्खियां भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी पढ़ने का अवसर मिला, और वो समाचार ये था कि भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर से दुनिया में मिसाल पेश कर रही है, मिसाल पेश कर रही है। ये रिपोर्ट कोई भारतीय का नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% से भी अधिक रहने का अनुमान है। और यह संभव इसलिए हुआ कि देश के में आज नेतृत्व करता है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। इसलिए, और यह समाचार देश के 140 करोड़ जनता के मस्तक को ऊंचा करने वाला है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। हर भारतीय आज अपने मस्तक को ऊंचा करके आज कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया, पहले भारत दुनिया को देखती थी, और आज दुनिया भारत को देख रही है, भारत को देख रही है। यह है मोदी जी का काम करने के तरीके, उनके कार्य पद्धति, और भारत के आर्थिक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प था, संकल्प से सिद्धि का उदाहरण अगर कोई दुनिया देखना चाहती है तो जो 60,000 करोड़ रुपए का उसमें मैन्युफैक्चरिंग एप्पल के फोन के कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है। और 60,000 करोड़ रुपए का जो मोबाइल यहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ। इसका मतलब देश को उसकी आमदनी मिली। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे, पहले हम नेट माइनस में जाते थे, आज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का देखेंगे तो पिछले वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट हुआ है। तो भारत से एक्सपोर्ट विदेशों में हुआ है,
पहले हम इंपोर्टर होते थे, बाहर से आयात करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। यह भारत की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यह हुआ इसलिए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के कारण हुआ है, उनकी नीतियों के कारण हुआ है। जो ट्रांसपेरेंसी ले आने का काम उन्होंने किया अपने सभी कार्य के क्षेत्रों में, उसके कारण ऐसा हुआ है। और इसीलिए आज सभी लोग उस पे विश्वास कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बिल का जो आया है, इस बिल का समर्थन करता हूं। और इसलिए भी कि समय इस और खुले मन से समर्थन करता हूं कि जैसे मैंने कहा कि यह मोदी सरकार है, प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है। जब लोगों की राय आती है, लोगों की जरूरत होती है, उन जरूरतों को ध्यान में रख करके समय समय पर अमेंडमेंट ले आती है। इस बार भी अमेंडमेंट ले आई। इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़े वर्ग को जो जीएसटी पे करता है उसको राहत मिलेगी, हाई कोर्ट पे केस कम होगा, हमारे जो पूल है, जो एक्सपर्ट के पूल है, जो उसमें भी वृद्धि होगी और उसमें भी अधिक लोग होंगे, और उसमें भी सुविधा मिलेगी। खुले मन से जो निर्मला सीतारमन जी ले आई है बिल, उसका मैं समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ले जनरल डॉक्टर डीपी वस रिटायर। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। जैसा कि सर्वविदित है कि टैक्सेस से मुल्क का खर्चा चलता है, और टैक्स सिस्टम जितना सिंपल होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही विश्वास बढ़ेगा और टैक्स इकट्ठा होगा। मोदी जी का तो ये रिकॉर्ड है कि न वो समस्या को टालते और न उसको पालते। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि सेक्शन 2 बिल हैं इसमें। एक तो है कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023, सेक्शन 109 and 110 of the CGST Act 2017, earlier amended through Finance Act 2023 to provide for constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal. Section 1110 of the GST Act 2017 deals with the qualifications, appointments, and terms and conditions for services of the President and the judicial and technical members of the principal and state branches of the GST Appellate Tribunal. Supreme Court of India had observed that certain provisions of the Section 110 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 are not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. The said provisions are as under. The prescribed maximum age limit under Section 1109 and 11010 of the Central GST Act 2017 for the post of President members is 67 and 65 years, respectively. Whereas under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 years and 67 years, respectively. A provisioning relating to eligibility of the advocate with a standing of 10 years of the bar for appointment as a judicial member akin to the one available in the rules formed under the Tribunal Reform Act 2021 is missing in the Central GST Act 2002. Hence, amendment has been brought to increase the age of members and president. इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय अरुण सिंह जी ने बताया कि लोअर एज लिमिट
50 साल है। उसमें ये भी है कि उनका जजेज ऑफ दी यानी डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस हो फॉर जुडिशियल मेंबर्स, एंड टेक्निकल मेंबर्स के लिए एक वकील का 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि नॉट ओनली वकील, सीए को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। एज फार एज इंक्रीजिंग द एज इज कंसर्न, क्योंकि रिटायरमेंट एज बाहर के मुल्कों में, रशिया में तो रिटायरमेंट एज है ही नहीं। पूल को इंटैक्ट रखने के लिए, टैलेंट को कारगर रखने के लिए वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता रहता है, एंड पीपल कीप वर्किंग इन ऑफिसेज आल्सो, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और नीचे वालों को प्रमोशन भी देनी होती है। तो इस हालात में रिटायर कर दिया जाता है। हम डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के टूर पे गए, स्टडी टूर पे, एंड देयर आई फाउंड दी साइंटिस्ट एंड कंसल्टेंट्स who were very agile, able and learned, और वो कह रहे थे कि हम रिटायर हो रहे हैं जल्दी। तो हमने रिकमेंड किया कि इनको रिटायर मत करो, ये तो नेशनल पूल है। इसी तरह यहाँ भी जैसा कि बताया गया कि इस पूल में भी टैलेंट अवेलेबल रहेगी, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि 50 years लोअर एज सर्टनली प्रिवेंट्स द यंग ब्लड टू पार्टिसिपेट, मगर क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और उनकी स्टैंडिंग भी जरूरी है, तो इसलिए ये जस्टिफाइड है। जैसा कि एज ग्रुप को बढ़ाया जा रहा है, उसमें मैं जरूर रिकमेंड करूंगा फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मोरली अपराइट पीपल कैन टेक करेक्ट डिसीजंस लाइक मोदी जी। जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी की इंस्पायरिंग एंड सीजन्ड लीडरशिप में कंट्री इज फोर्जिंग अहेड ऑन ऑल फ्रंट्स। इसलिए इन मेंबरान का भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली जरूर होना चाहिए, ताकि दे कैन टेक करेक्ट एंड जस्ट डिसीजंस। तो ये तो मेरा एज के बारे में था। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से सरकार चलती है, मुल्क चलता है, और उसका फेयर कलेक्शन में इट हैज बीन एम्पलीफाइड कि 1,67,000 करोड़ का मंथली कलेक्शन हुआ है, और पूरे साल में तो ये 20 लाख करोड़ चला जाएगा, जिसका यूपीए के टाइम में कंपैरिजन किया जाए तो बहुत भारी जंप है। और दुनिया की भी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेस से मुल्क चलता है। अगर आपकी सरकार की किट्टी में पैसे हैं तो गरीबों को लाभ भी मिलेगा, और गरीबों को लाभ टू द ट्यून ऑफ के जैसा बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ गया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया था कि 20,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मित्र मुल्कों को। साइमल्टेनियसली वन रैंक वन पेंशन इज ए वेरी बिग मोरल बूस्टर फॉर द एक्स सर्विसमैन, यानी कि जितनी मेरी पे थी उससे ज्यादा पेंशन है। तो ये जहां देश में सैनिक का सम्मान है वो देश महफूज होता है, सुरक्षित होता है। इसी तरह से ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन की नौबत आ गई है। पहला तो ऐसा था कि चाहे अनएम्प्लॉयमेंट कहो या डिफिकल्टी इन गेटिंग द जॉब, के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए माइग्रेट होते थे, खासकर टेक्निकल पीपल।
या जिसको भी मौका मिलता था इन्हें राइट वे और डोंकेट वीसा से भी बहुत गए। अभी भी उनकी बहुत जरूरत है बाहर के मुल्कों में, यानी कि हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि दे हैव ए बिटर एक्सपीरियंस विद अदर्स, विद चाइनीज, विद देयर नेबर्स। तो इंडियंस आर रिक्वायर्ड इन मास। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पूरा वर्ल्ड चलाएं, खासकर उसको सर्विसेज दें। तो विदेश जाने के लिए तो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर रिवर्स माइग्रेशन ये प्रूव करता है कि वहां से भी बेहतर फैसिलिटीज हमारे देश में पैदा हो गई हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम असल में जमीन पे उतरा है। वन नेशन वन टैक्स इज ए बिग सिंप्लीफिकेशन। और इसी तरह से आयुष्मान भारत का कार्ड है, सारे देश में चलता है। यूनिफॉर्म अगर मुल्क में सारे कानून हैं तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहती है। हरियाणा इसमें 5 कदम आगे चला गया। जो गरीबी रेखा का कार्ड 1,20,000 सालाना आमदनी का था, हरियाणा ने बढ़ा के 1,80,000 कर दिया है। और इससे दायरे में जंप करके काफी बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला योजना का, जितने भी लाभकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं मोदी जी सरकार की, उनका लाभ बहुत लोगों को मिलेगा। यानी कि अभी तो मैं बीच में ही था मैडम। हाँ। इसी तरह बर्डन ऑफ कोर्ट्स सिंप्लीफिकेशन से, यानी ट्रिब्यूनल बनेगी, ट्रिब्यूनल में अपील का मौका मिलेगा, तो ये 6 करोड़ का जो केसेस का पेंडेंसी है ये कम होगा। हालांकि ट्रिब्यूनल की टैलेंट बढ़ेगी और उनकी नंबर्स भी बढ़ेगा, तो केसेस का जल्दी निपटारा होगा और कोर्ट्स को भी रिलीफ मिलेगा। आधा मिनट में करिए। चलो, आपका हुक्म हमने मान लिया। जय हिंद। और भी मेंबर हैं। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादी। धन्यवाद उपसभापति जी। 10 मिनट है आपके पास जी। आपने मुझे द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया। उपसभापति जी, ये बिल 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, उसमें सेक्शन 109 और 110, ये जीएसटी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल रिकमेंडेशन से जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन के लिए ये बिल है मैडम। जीएसटी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ऐसा प्रस्ताव है। जो फॉर्मेशन जुडिशियल मेंबर्स का होगा, उसमें जो चयन होगा, जुडिशियल मेंबर के लिए जज या फिर हाईकोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिनका 10 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है, उनका चयन हो सकता है। इस बिल में एडवोकेट्स को भी चयन करने का प्रोविजन है मैडम। जिसको 10 साल का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का अनुभव है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बिल में प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स की आयु निश्चित की गई है। कम से कम 50 उम्र होना जरूरी है। पहले प्रेसिडेंट की उम्र 67 थी, वो अब 70 कर दी गई है। मेंबर्स की उम्र 65 थी, वो अब 67 इयर्स कर दी गई है। अगर कोई क्लेम्स डिनाई होते थे तो उन्हें सेकेंड चांस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये सभी लोग, सारी कंपनियां हाईकोर्ट जाते थे
और ये हाईकोर्ट के जो केसेस की संख्या है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास हाईकोर्ट में है। मेरे ख्याल से जब ये ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन होगा तो ये हाईकोर्ट का बर्डन कम होगा और इन लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। ये जीएसटी कानून, उपसभापति जी, आधुनिक भारत निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। विकसित भारत संकल्प का जो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है वो पूरा करने में ये जीएसटी कानून बहुत बड़ा सहयोग देगा। उपसभापति जी, 2017 में जब ये जीएसटी कानून लाया गया तब केंद्र के 17 और राज्यों के 13 अलग अलग कानून थे, उसको खारिज करके ये जीएसटी कानून लाया गया। तब कुछ राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने चिंता जताई कि केंद्र हमारा शेयर अगर समय पे नहीं देगा तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। उनकी और एक चिंता थी कि उनका जो स्थानीय कर है, आबकारी कर है, वो उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को और पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी को, जिन्होंने सभी राज्यों से बात करके उनको कन्विंस करके ये कानून लाया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सुरक्षित करने का आश्वासन तब दिया था और इसी के चलते 5 साल तक अगर उनके टैक्सेशन में, कलेक्शन में कमी हुई तो उसे पूरा करने की हामी भी केंद्र सरकार ने दी थी। वो चलता रहा। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोविड के महामारी के राज्यों के वक्त जो राजस्व कलेक्शन कम हुआ, टैक्स में गिरावट आई, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा किया था। महाराष्ट्र राज्य में भी हमने देखा सर, कई सारी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, एक एक कंपनी के 600, 800, 1000 वेंडर्स रहते थे। इनपुट क्रेडिट की वजह से ये सारे अंडर वन अम्ब्रेला आ गए और सबने रजिस्ट्रेशन किया और इसकी वजह से आज देश में ये जीएसटी कानून की वजह से देश का राजस्व बढ़ा है। पिछले महीने का अगर आंकड़ा देखें तो सभापति जी 1,67,000 करोड़ पिछले महीने का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साल का लगभग 20 लाख करोड़ कलेक्शन होने का अनुमान है। इसी की वजह से केंद्र सभी राज्यों को लगातार अपना हिस्सा देता रहा है और इसी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है सर। ब्रिजेस हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन जो कई सालों से पुराने थे, मरम्मत की जरूरत थी। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक ही दिन में 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण का शुभारंभ एक दिन में किया था। एयरपोर्ट्स, 70 साल में हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज सभापति जी देश में 149 एयरपोर्ट्स कार्यान्वित हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। आधार कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से हर एक परिवार को 5 लाख रुपए देकर आरोग्य की दृष्टि से उनको सुरक्षित किया गया है। पीएम स्वनिधि से छोटे व्यापारियों को लाभ हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से रेशन देने का काम हो रहा है। वंदे भारत जैसी रेल जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, पूरे देश को इंटरकनेक्ट करने में ये काम भी हो रहा है। कई सारे शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। ये सभी पैसा लोक कल्याणकारी काम में खर्च करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसकी वजह से उद्योग कर्मियों का और कंपनियों का इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, जिसकी वजह से देश प्रगति कर रहा है। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। देश में सर स्टार्टअप्स की संख्या आप देखें तो जो 2014 से पहले 350 स्टार्टअप्स कंपनियां थी, आज देश में 90,000 स्टार्टअप कंपनियां हो चुकी हैं जो जॉब्स भी क्रिएट कर रही है। लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी पे पूछा जाता है, तो ये एक अच्छा समाधान उसके लिए हो रहा है।
हमारे देश में 2014 से पहले 2 कंपनियां थी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। सर आज 200 से ज्यादा कंपनियां देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। एमएसएमई सेक्टर में आज 13.4% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। डीमैट अकाउंट की बात हुई सर, 2014 से पहले देश में सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स देश में है सर। सर इंटरनेट आज हमारे देश में करीबन 88 करोड़ लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरह लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है सर। सभी एयरपोर्ट्स अच्छे चल रही हैं, सभी होटल्स अच्छे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, आप एयरपोर्ट्स में आप फ्लाइट की बुकिंग्स देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इस वजह से आ रहा है सर। और ये सब करते वक्त ये सब ऑनलाइन करने की वजह से बहुत बड़ा फायदा देश का हो रहा है। ऑनलाइन प्रणाली की वजह से अभी ये फेसलेस कर दिया गया है, किसी को गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। इससे करप्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है सर। मेरी बस एक मांग है आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी है सर। केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो राज्य है, उन्होंने इसे लागू करने से मना किया है। हमारे महाराष्ट्र में भी सर 2 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी तो वहां पे मना किया गया था। जब 2 साल पहले केंद्र ने डीजल पेट्रोल के रेट कम किए थे तब महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी। जून 2022 में जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आई तब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने तुरंत इसको लागू किया और पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे सर। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 2014 में 10वें स्थान पर था, वो आज 5वें स्थान पर आ चुका है सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे करके हम तीसरे स्थान पर आएंगे। मैं समझता हूं सर ये बिल विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए ये बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, इस विधेयक में प्रस्ताव है कि जो ट्रिब्यूनल है सीजीएसटी का, उसमें जो नियुक्तियां होती है धारा 109 और 110 के अंतर्गत, उसमें जो पहले संशोधन हुआ था उसमें माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने इंगित किया कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के अन्य नियम हैं उसके अनुसार ये नहीं है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। जो अन्य ट्रिब्यूनल है, चाहे वो वेट के ट्रिब्यूनल है, एक्साइज के ट्रिब्यूनल है या अन्य जो भी ट्रिब्यूनल हैं, उन सब में जो नियुक्ति का प्रावधान था, जो जज की नियुक्ति होती थी उनकी आयु 70 वर्ष थी और जो अन्य उसके सदस्य होते थे उनकी 67 वर्ष थी। जबकि इसमें जो संशोधन हुआ था उसमें आयु जज की 67 वर्ष और जो अन्य सदस्य हैं, टेक्निकल है, जुडिशियल है, उसकी आयु 65 वर्ष थी।
न्यूनतम 50 वर्ष थी। तो इसमें यह संशोधन आवश्यक था और ट्रिब्यूनल्स के समान लाने के लिए कि जो भी उसमें नियुक्ति हो तो जज की आयु इसके तहत 70 वर्ष 67 के बजाय और अन्य सदस्यों की आयु 65 से 67 वर्ष की जाए। इसके साथ साथ सेंट्रल का जो ट्रिब्यूनल है उसको भी गठन करना आवश्यक था और स्टेट में भी सब में ट्रिब्यूनल रहेगा जिनको नोटिफाइड किया जाएगा। अगर ये सेंट्रल का ट्रिब्यूनल गठित नहीं होता है तो इससे न्यायालयों में सीधे लोग स्टेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट से जब एग्री नहीं होते तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उससे वहां पर मामलों का बर्डन बढ़ रहा था। ये बनने से सेकंड अपील सेंट्रल वाले ट्रिब्यूनल में करने को करदाताओं को मिलेगी और कोर्ट का भी इससे बर्डन घटेगा। इसके माध्यम से जहां जो एक विसंगति थी वो तो दूर होगी ही, लेकिन माननीय सभापति जी, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कौटिल्य का सिद्धांत था कि जो कर देने वाले हैं उनसे कर इस प्रकार लिया जाए कि उनको कष्ट ना हो, वो भी दुखी ना हो, और जो कर लिया जाए उसका उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए। पहले भी जीएसटी लागू करने के बड़े प्रयास हुए, किंतु उन सरकारों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो प्रयास सफल नहीं हुए। क्योंकि जब हम आजाद हुए, जो काम 10 वर्ष के अंदर हो जाने चाहिए थे, उन पुराने कानूनों को बदलने के, वो 75 साल तक नहीं हुए। माननीय मोदी जी के आने के बाद सब प्रकार के कर सुधार भी लागू हुए, जिसमें से जीएसटी भी एक प्रमुख कर सुधार था। सबका मोदी जी के ऊपर विश्वास था, क्योंकि पहले की सरकारों की जो स्थिति, प्रधानमंत्री जी कहते थे 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए खर्च होते हैं। तो करदाता सोचता था कि कर क्यों दिया जाए, जिस कर में से विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए खर्च ही 15 रुपए होने हैं और 85 रुपए की बंदर बांट होनी है, तो कर क्यों दिया जाए। व्यापारी भी जो सब प्रकार का कर भी देता था, सब प्रकार के सामुदायिक कार्यों में सहयोग करता था, चाहे कहीं मंदिर बनाना हो, धर्मशाला बनानी हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कोई जागरण हो, कोई कीर्तन हो, बिना उसके सहयोग के होता नहीं था। लेकिन फिर भी उसको चोर साबित किया जाता था, उसका अपमान किया जाता था। उससे लेते सब थे, जो लेने वाले थे उनके चुनाव भी उससे बिना लिए नहीं होते थे, लेकिन उसको चोर कहते थे। मोदी जी की सरकार आई तो उसको जिम्मेदार नागरिक के रूप में, इज्जतदार नागरिक के रूप में, देश का विकास में सहयोग देने वाले के रूप में स्थापित करने का काम हुआ। मैं जब छोटा था तो पढ़ता था, जब मैं जा रहा था बाजार में गया तो एक जानने वालों की दुकान पर बैठा, आरती थे, वो कहने लगे आओ बेटा। मैं बैठा, मैंने कहा क्या बात है, पसीने क्यों आ रहे हैं? कहने लगे सेल टैक्स अफसर आने वाला है। ये स्थिति थी। वो कहते थे अपने लिए कम कमाते हैं, उनके लिए ज्यादा कमाते हैं। चोरी करना वही बताते थे, क्योंकि बिना उनकी रिश्वत के केस डिसाइड नहीं होता था। अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा वो केवल जयपुर में नहीं, हर शहर में सेल टैक्स कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी है। इसके लिए उनको करना पड़ता।
इसलिए किसी का विश्वास नहीं था। जो विपक्ष के साथी, विपक्ष के लोग विरोध करते हैं, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब मोदी जी की सरकार आई और यह प्रयास हुआ कि वन टैक्स वन नेशन किया जाए और जीएसटी के माध्यम से 17 टैक्स और 13 सेस एक करके एक किया जाए, तो सरकारें बहुत सारी विपक्ष की थी। आखिर नेता और नीयत ठीक थी, नीति ठीक थी, इसलिए सबको विश्वास में लेकर के ये किया। क्योंकि जो विपरीत सरकारें थी वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए विरोध करती थी, पर मन में उनके भी कहीं ना कहीं ये था कि ये मोदी जी की सरकार है, ठीक दिशा में चल रही है, इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए। सबने जीएसटी काउंसिल में सहयोग किया और आदरणीय सुशील मोदी जी बता रहे थे, वो अनेक वर्ष तक उसके चेयरमैन रहे। उस काउंसिल में एक भी फैसला, केवल एक फैसले को छोड़कर ऐसा नहीं हुआ जिसमें सर्वानुमति ना हुई हो। उस सर्वानुमति से फैसले हुए। हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जो तय हुआ, कभी रेट घटे कभी रेट बढ़े, लेकिन उसी आधार पर सरलीकरण होते हुए आज व्यापारी खुश है। मैं एक व्यापारी से मिला, मैंने पूछा जीएसटी के बाद क्या परिवर्तन आया? कहने लगे एक परिवर्तन आया, पहले मैं टैक्स 5,000 रुपए देता था लेकिन परेशान भी रहता था, आज मैं टैक्स 1 लाख रुपए देता हूं जीएसटी के बाद, पर मैं सुकून के साथ सोता हूं, कोई मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। यह जीएसटी का परिवर्तन है। सारे इकोनॉमिक सुधारों के साथ जिस समय जीएसटी लागू हुआ 92,000 करोड़ का कलेक्शन था, आज 1,67,000 करोड़ का कलेक्शन है। और मुझे जहां तक ध्यान है, एक महीने में तो शायद वो मार्च या अप्रैल का महीना था, 1,82,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। यह 2 लाख करोड़ की ओर आगे बढ़ रहा है, लगभग दुगुना कलेक्शन हो रहा है। लेकिन उस कलेक्शन से क्या फायदा हो रहा है? देश का बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, दूरियां घट रही हैं। माननीय सभापति जी, मैं पहले देहरादून से दिल्ली आता था तो 7 घंटे लगते थे, पेट्रोल डीजल भी ज्यादा लगता था, शरीर भी थक जाता था। लेकिन मैं अब आता हूं तो 4 घंटे में, और अभी 1 साल बाद आऊंगा तो 2.5 घंटे देहरादून से दिल्ली आने में लगेगी। यह मोदी सरकार का कमाल है। केवल बुनियादी ढांचा नहीं, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है, पूरे विश्व में आज विश्व का व्यापारी, विश्व का उद्योगपति, बंद करना सर, टेक्निकल फॉल्ट आया, अपलोड नहीं हो रहा है। मुझे बताया गया था कि 20 मिनट बोलना है। माननीय सभापति जी, मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं कि जिस प्रकार से सारे विश्व का उद्योगपति, व्यापारी भारत में आना चाहता है, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इन्वेस्टर मीट के लिए विदेश होकर के आए, बड़ा अच्छा उनको रेस्पॉन्स मिला है। आज सब तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रतिदिन 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है, हर हफ्ते वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई है, 5 लाख रुपए तक का गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक मिलेगा। इस प्रकार गरीब कल्याण के काम, एमएसएमई को बढ़ावा देने के काम, सब क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए पुरजोर समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है जब आपने एक्साइज, केंद्र की सरकार ने एक्साइज 10-10, 15-15 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पर घटाई, तो विपक्ष की सरकारों ने नहीं घटाई। महंगाई का शोर तो खूब बचाया। हिमाचल में तो यहां तक हुआ कि चुनाव में वादा करके आए कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, पर सरकार में आते ही तीसरे दिन 3 रुपए लीटर दाम बढ़ा दिए। इसलिए डीजल पेट्रोल भी इसमें आ जाएगा, तो इस प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। वन नेशन वन टैक्स
वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब चलेगा और देश आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चलें। ब्रीफली सभापति महोदय, मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। जो अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया है, उसी का यह बिल एक अंग है और वो व्यापक सुधार में लेबर लॉज, लैंड लॉज से जुड़ा हुआ और टैक्स में जो सुधार हुआ जीएसटी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर की बड़ी भूमिका थी, पूरी दुनिया में इनफॉर्मल सेक्टर की भूमिका होती है। यह अनौपचारिक सेक्टर वह होता है जिस पर जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो होता है, लेकिन जिस पर टैक्स नहीं लगता है, सरकार किसी भी एजेंसी से उसको मॉनिटर नहीं कर पाती है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसकी हिस्सेदारी नहीं होती। सबसे बड़ा एडवांटेज जो जीएसटी का मोदी जी ने किया है, वह एडवांटेज यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। अभी जो जून 2023 तक जो जीएसटी एसएससी की संख्या 2017 में 44,35,000 थी, वह बढ़कर 1,40,00,000 हो गई। यह 218% की वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार से जो रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या, एक्टिव कंपनीज की संख्या 18% बढ़ी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस जीएसटी के द्वारा जो हम एक पंक्ति में कह सकते हैं, इंडियाज रिवर्स ब्रेक्सिट मोमेंट था। गुड, थैंक यू। श्रीमती निर्मला सीतारमन to reply the discussion. Sir, thank you very much. And I thank all the members, more than 20, who have spoken on this bill. It was a fairly simple, small amendment, but a very significant one at that, because the ministry was rightly alerted and also advised by the Supreme Court of India's registrar on the suggestion of the Chief Justice of India that the amendments that we have brought earlier will have to be in alignment with and be in line in similar fashion with the amendments done to the tribunals, other tribunals. So since it was a very valid suggestion and it was only right that it was pointed out by the Supreme Court, so we quickly thought it is important for us to respond and respond in time, and therefore we've come up with these amendments, essentially just two of them, where the age limits had to be for appointment both for judicial and technical members had to be aligned with the rest of the tribunals, where 67 and 70 respectively for the member and the chairperson had to be addressed. So we readily brought that in. The second amendment also, which was desired, so that we are in consonance and in alignment with the rest of the tribunals, was where advocates with 10 years standing in the courts will also be eligible to be appointed, which was only a fair suggestion and right suggestion. So we agreed that this should come through. But in the course of talking in support of this bill, many honorable members have raised, I would think, absolutely important issues about the GST. And I would like to just respond to some of them, because it is important for the members to know that the issues that they've raised are definitely of such nature that it needs to be clarified or replied to. I won't protract the replies with too much of a response, detailed response, but pointedly, Member Amar Patnaik had certainly raised the issue of an authority for advanced authorization. It is provided for in the law, the central GST law, and section 101A does speak about it.
But it is also equally true that it has not yet been set up. And the importance of setting up is what the member has highlighted. GST is still evolving. We have overcome many of those difficulties by gradually fulfilling those which have been identified even at the drafting stage of the law. Advanced authority ruling is also something which the trades would love to have it. But I just want to say that we recognize the concern of the member. Member Amak Patnaik also was very clear that the vacancies in the tribunals, referring to the former Chief Justice of the Supreme Court, saying at that time the concern expressed by the Chief Justice then seems to be true and relevant even today, saying that the numbers. I would like to respond by saying the concern expressed by the Honorable Chief Justice, former Chief Justice, was well worth mentioning, and we took into cognizance and acted on it, tried filling up the post vacant. Filling vacant posts is a dynamic thing. People come in, people retire, we immediately find alternative lists and then fill it up. But the numbers have today come down, and there are still a lot of shortlisted numbers and names with which we are moving ahead. So sooner we will be filling up as many vacant positions. But even as I say this, and since Shri Amar Patnaik is somebody who's been in the administration, has done a lot of these kind of, looking at public accounts and so on, it is not easy to find people, especially technical people and also retired judicial officers. There are only a certain number. Even if you fill all of them in, you still have vacancies lying there. So it is a real-time, hands-on problem that I am facing, and I would certainly like to bring that to the notice of the honorable member. We also had the former finance minister of Bihar, Sri Sushil Modi ji, talking, highlighted many of the issues, and whilst agreeing with the amendments that we have brought in this time, raised issues and also suggested that the risk profiles can be asserted before, giving input credits, and also making sure that we can restrict the claims. These are specific points. I'd like to assure the member that these are specific points on the GST Council has had elaborate discussions. Risk profiling before input tax credit is given are all issues on which the discussions have happened in the GST Council. Some steps have been taken to address them, and these are not as if it is addressed once and never again this topic comes up for discussion again. Some topics keep coming as we go along to realize if this can be a better opportune time to do if we didn't do it earlier. So risk profiling before giving input tax credit or restricting claims are issues on which the GST Council has been talking. Sir, there was also this reference made by Honorable Member Sushil Modi that if 60 lakh is the threshold for these small firms to get registered, beyond which they have to get registered, and if they are 60 and below, they can be kept outside. Or is it 40 now, or is it 20 now? Has been a question which he did raise, and considered that at the current moment it is 40 lakhs, and suggested that even at the time of drafting this legislation, there was this question whether 60 can be given and can it be therefore given now. I do hear him. Equally, I was very pleasantly surprised when one of the other members speaking said that it is a desire to, because once you come into this GST enrollment, small or big companies all benefit because of the input tax credit. And the attempt should be, and ideally should be, for more and more small firms also to come on board, because they then become also people who can vend or sell things to larger companies and therefore get the benefit of input tax credit. So whilst increasing the cap
from 40 to 60 may be a good suggestion. I leave it to the council to decide, but it is also equally that more small firms ideally should also come on board. So the other question about the other suggestions that Honorable Member Sushil Modi spoke about was ease of doing business for small companies. I want to say that from registration to return filing and payments, all steps are now completely online. There is no need for anyone who wants to come and set up a unit and then register for GST to run after the offices. In fact, I had the happy occasion of visiting Gujarat and going over to the constituency of the finance minister of Gujarat, where he has set up GST Seva Kendra, which is an idea which many states are adopting, where in one entry, meaning one visit to the GST Seva Kendra, you can register all in a matter of 5 minutes. There are people sitting there looking at your documents, also cross-verifying there and then. Register within 15 days. But if there is more to be asked, they shall do it, and only then will they go and visit these firms which want to get registration. So this example I'm taking of this Gujarat e-Seva, GST Seva Kendra is because such measures are being taken by the GST Council and the ministers who are in it to make sure that ease of doing business, particularly for the small firms, is brought in. Also, the GSTR 3B returns are now auto-populated. So it doesn't matter if you have all the data or not. All that you have to see is if those entries which have come in as a part of the auto-populated information, whether you agree or you don't. And if you don't, you can always say you don't. So these kind of measures are already being taken up. And I think because of that, the ease of doing business is genuinely an issue which the council is servicing. So I had another member talk about improvement in the GST system. Bida Mastan Rao, if he's here, member, he's here, I can see him. So he said, improvement in the GST system is important. The grievances will have to be addressed. And on that, he also wanted us to do a lot of steps to go ahead taking. But I want to bring some facts before the honorable member. The number of grievance tickets which were raised earlier in return filing, that is, has fallen to 4 per 10,000 returns which are getting filed. So 10,000 returns, it used to be 67 tickets before, that is in 2017 for every 10,000. Today it's only 4. Then there has also been consistent growth in the monthly return filing, which has reached now 90% by the end of this month, and as against the 71%, which was the case 3 years ago. In the current financial year, the revenue has grown to average 1.66 lakh crores per month, and with a growth of about 11.9% over the GST collection of 1.49 lakh crore per month in the financial year 2022-23. So the growth is steady, the growth is consistent. It has reached a sort of number where you can say safely that below that will not be the collection, it can only be above it. In GST now, sir, pre-filled returns are provided to taxpayers. Just a minute ago, I spoke about it. Also, the input tax credit statement is provided to ensure error-free returns. So earlier there used to be this worry that if I do one error, I'm unable to correct it. I can't get the same form back, or if I get it also, I'm not sure if I'm doing the right correction. So now we are providing the statement, ITC statement, so that error-free entries can happen. So nil returns can be filled by sending just an SMS. So you don't have to every time only keep filling the the form online. You can send an SMS, and that will also say nil returns. I don't have any returns to file. Even that is taken on board. And for mismatches in the return, and self-assessment and correction facility has been provided for the taxpayer. So these are all steps which are taking the system to be better, and I'm sure more such steps will happen. So then Dr. Anil Bonde spoke about
needing more GST appellate tribunal benches. He says we need more in Pune, Mumbai, Aurangabad, and Nagpur. I wish to say, sir, the decision on the number of benches in any state is as requested by the state itself. We don't decide how many benches have to be given to A state as opposed to B state. So when the state itself says, give me only 3, for instance, in Maharashtra, they've asked for 3 and we've given 3. So if the member wants more, or the honorable member feels Maharashtra needs more, he's very welcome to talk to the state government and see if the state government wants to have more. And also, even the locations of where these benches will have to be situated is very much as per the state's own recommendations. Sir, there are other members who spoke about various other issues which are not so pertaining to the GST itself. But even though they refer to issues which are beyond the GST, there's one thing which I want to respond to Sri Tambidurai, who spoke because there is a severe extreme weather situation having created rain and floods in the southern districts of Tamil Nadu, as a result of which just yesterday or the one day before, there have been representation. But coincidentally, representations also had come to me because 10 days ago, 10 or 15 days ago, there was a serious flood in Chennai city. And the industrial estate in Ambattur was completely affected. So they wanted us, because every 20th people will have to file some returns. This 20th, they thought, which is today, they thought they will not be in a position to file. And because that request had come in already because of Chennai, and now because of the 4 states in southern Tamil Nadu, we have extended the deadline. That is, that which has to be done on 20th can now be done till 27th. 1 whole week we have extended the date. So I wanted to respond to that. That is a relief because November GSTR 3B filing time is what I'm referring to. So that has been now postponed. Sir, but the issue which, for instance, member Tambidurai referred to, since it pertains to the flood situation, and I want to just take this opportunity, the members will kindly pardon me for talking about non-GST, non-bill related issue, but just 1 or 2, because this might be some kind of a message also for those people who are in a desperate situation because they are cut off completely. Women and children are being airlifted with helicopters. So I take the few minutes for it. So on 18th December, a total of 10 rescue teams of the NDRF were mobilized for southern Tamil Nadu in consultation with the state authorities. 8 teams are deployed just in Thoothukudi district, 2 teams in Tirunelveli district, 1 team in the RRC Chennai even now. 2 teams are reserved at battalion headquarters, and total of 13 teams are available in Tamil Nadu. Sir, 8 helicopters were provided. Additional helicopters are also being sent. Then 1 ship with ICG, with rescue and relief material are all waiting there and also supplying materials for those affected districts. 19 rescue teams are in those 4 districts. Army has 2, Coast Guard has 7, NDRF has 10. Other than that, 900 crores of funds, which is the fund for 23-24, 1,200 crores in total is what the disaster relief, state disaster response fund is, of which 900 crores is the center's share. Even that is there. As reported by the state government, sir, the balance available with the state SDRF account as of 1st April 2023 is 813.15 crores with the state itself. The first installment of 450 crores of central share of the SDRF for the current year 2023-24
has already been released earlier. The second installment of 450 crore has also been released on 12th December 2023. So the central government is not in any way delaying or forgetting to provide timely relief. I want to assure honorable member, and from my point of view, from the Ministry of Finance point of view, I had ensured that United India Insurance, 4 public sector general insurance companies are all sent for that Michang cyclone itself to the ground. Surveyors are in the ground. They are sending us almost daily report on how much they've covered. And we ensured, and the Secretary, Department of Financial Service is closely monitoring, just so that people who have to get insurance money for the loss that they've been put to are getting it in time, and therefore the agencies, insurance companies and their agents are literally on the ground doing the job. For the 4 states, sir, for the 4 districts which have been affected, I thank the Home Minister for not only immediately responding with all these NDRF teams, but he has also sent the survey teams already to Tamil Nadu. So I would like to very clearly highlight the fact that with due respects, although the Chief Minister had come here yesterday and because of his other preoccupations got to sing Prime Minister, who gave even at late night the time to meet him, because an honorable Chief Minister is asking for time, particularly that which Chief Minister who's coming from a flood hit state, he gave time even at the night after having spent the whole day in the Parliament. He gave time in the night, met with the Chief Minister, and this is the response which has already gone before the Chief Minister met with the Prime Minister himself. So I want to highlight the fact that Tamil Nadu, and particularly because of the speedy response of Home Minister, had got those relief and rescue helicopters, boats, medicines, and other assistance in time. So we shall be closely monitoring, and I assure the people of Tamil Nadu, Prime Minister Modi will be there at every time you need. So largely, I think these were the issues, sir. But I'm indeed grateful that there are members who spoke about a few features of the GST, which I want to say, particularly our lady member, Ramila Ben Bhara. She spoke in Gujarati, but I'm immensely grateful for her. She clearly identified what is the blessing that GST brings. She spoke about the abolition of, in a way, the cascading effect of tax, as a result of which all of us before GST used to pay such high prices for daily use commodities. This cascading effect was removed. As a result, today, daily use, whether toothpaste or hair oil or brush or anything of those kind, or your daily cooking oil, everything has come down in its price. I'm grateful that the honorable member, Ramila Ben, nicely spoke about it, and she also said, because of GST, people have trust in governments. Because otherwise, earlier you were running between pillar and post and then saying, I'm paying so much, why should I pay, and so on. She brought it out very clearly. I also appreciate the anxiety which many members mentioned, and I take the name of Shri Ghanshyam Tiwari saying, please, will you get the petrol and diesel into GST? A lot of other members also mentioned, I wish the state governments see the point. Eventually, customers will pay less tax if the GST is brought in. Overlapping, doubling of tax will not be there. So those points were very interesting that very many of those members raised it. I'm sure, sir, the last point which I want to put before you, Honorable Chairman, was Dr. Lakshman saying advocates have got a chance to get into the tribunal. Why not the chartered accountants? So that was an interesting aside. But with these responses, sir, I submit that the House kindly take it upon themselves to pass this bill. Thank you very much. The question is that the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Close to instance part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Close to is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title instance part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. That the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 20th December 2023 passed 1. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, 2. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and 3. The Bharatiya Sakshya Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan in place of his colleague, Sri A. Narayan Swamy. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Sri Narayan Swamy, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 8 in today's revised list of business. Sri V. Muralidharan in place of his colleague, Susri Pratima Bhomik. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Susri Pratima Bhomik, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 10 in today's revised list of business. Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Sir, I rise to move that the bill to provide for the immediate effect for a limited period of provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. 5 minutes. So this bill, in effect, replaces the 1931 bill of a similar nature. And if you look at the statement of objects and reasons of the bill, it gives immediate effect to something that happens every year. When an announcement on increasing of either the customs duties or excise duties is done, there is a time lag before it is passed in the parliament. Now, during the intervening period, to avoid any speculation to take place, what happens is that the tax increase starts kicking in right from that midnight of that particular day. Now, for the intervening period, there has to be a law which would actually ensure that during this period, whatever is collected or whatever is refundable, that would be taken into account into the consolidated fund of the state. And there is a bill which sanctifies that particular process. So this bill actually sanctifies that particular process, enables the government to collect those taxes right from the day the announcement is made till the formal finance bill is passed in the parliament. So I think there is nothing to object on this particular bill. However, since the Honorable Minister of State may be here, I would like certain clarifications from the Honorable Minister might consider to clarify on this. That is in Section 3 of the bill. This is relating to power of the central government to make declaration. It says that
In the third line, the central government may cause to be inserted in the bill a declaration that it is expedient in the public interest, dash, dash, dash. The point here which I want to make is, can we include this particular provision each time during the introduction of the finance bill itself and get it enabled every year instead of having this act to be passed separately from time to time? That could probably be considered by the law ministry as well. The second is in section 4, number 1, subclause 1, a declared provision shall have the force of law immediately on the expiry of the day on which the bill containing it is introduced. Now, sir, in the age of internet, speculation can take place in a time gap of even 1 hour, 2 hours, 3 hours. So if you give 6 hour or 7 hours time frame and allow the speculators or all those elements who are involved in speculation to trade in this particular time, I think it is unfair. Therefore, whether the government would think of considering replacing the word expiry of the day to say that it actually kicks in immediately. And I think in the age of internet, we can actually make it happen also, because all our systems are IT enabled. The last point, Honorable Chairman, sir, is on section 5(1), where there is a mention that the refunds shall be made of all duties collected, which would not have been collected if the provisions adopted in the enactment has been the declared provision. That is, if finally the bill doesn't accept this. My clarification that I would seek from the ministry is whether these refunds would include with interest or without interest for that particular period. Thank you, Chairman, sir. I support the bill, sir. I support the bill. My party supports the bill because I think this is the only way to move forward. However, Honorable Minister might consider these suggestions. Honorable members, now it is going to be 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6 p.m. to dispose of the listed business. The time is extended beyond 6 p.m. to dispose of the listed business. Shri Ghanshyam Tiwari. माननीय सभापति महोदय, ये प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, ये बिल जो है 1931 में बने हुए बिल के स्थान पर लाया जा रहा है। इस बिल में 3-4 बातें प्रमुख रूप से हैं। पहली बात तो ये है कि जब कोई बजट पेश होता है और बजट पेश होने के बाद में जब तक फाइनेंस बिल नहीं आता है, उस पीरियड के बीच में जो पीरियड रहता है, उस पीरियड में जो टैक्सेज होते हैं उनके संबंध में किसी प्रकार का घालमेल हो सकता है, वायदा हो सकता है। तो उन सब से बचने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जिस दिन जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होगा तब तक के लिए तुरंत रूप से सरकार जो है टैक्सेस को वसूल कर सकती है। इस बात के लिए इस कानून को लाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह बिल केवल 75 दिन तक रहेगा और 75 दिन के बाद में जो एनेक्टमेंट आएगा, उस एनेक्टमेंट में जो प्रावधान होंगे उस प्रावधानों के अनुसार ये काम करेंगे और उसमें जो टैक्स वसूल कर लिए गए हैं उस एनेक्टेड बिल में अगर उन टैक्सों के बारे में प्रावधान नहीं है तो वो बिल ये प्रावधान करता है कि वो पैसे जिससे टैक्स वसूल किया गया है उनको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। सभापति उपसभापति महोदय, वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान और कर्नाटक में यह बिल लागू है। अब इसको केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया है, लेकिन यह बिल न तो जीएसटी के टैक्सेस पर लागू होगा और न इनकम टैक्स पर लागू होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए अलग से कानून बना हुआ, उसके हिसाब से काम होता है और जीएसटी का अलग से सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से लागू होगा। इन दोनों चीजों को छोड़कर बाकी जो भी नए टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्सों पर यह कानून लागू होगा और ये 1931 के कानून को रिप्लेस करेगा। माननीय सभापति महोदय, कर निर्धारण में और करों को सरलीकरण करने में जिस प्रकार का माननीय मोदी जी सरकार ने काम किया है वो काम अद्भुत है।
माननीय उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब कर की चर्चा करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा करना उसमें समाहित होता है। उन्होंने लिखा सुखस्य मूलम राज्यम अराज्यस्य मूलम धनम। पहला वाक्य, सुख का मूल राज्य है और राज्य का मूल धन है। अब राज्य धन कहां से लेता है, तो उन्होंने उसकी भी व्याख्या की है कि राज्य धन इस प्रकार से ले कि जैसे कोई मधुमक्खी है, वो किसी फूल पर जाकर बैठती है, उसका रस लेकर चली जाती है, लेकिन फूल का स्वरूप नहीं बदलता है। तो उसी प्रकार से राजा को या शासन करने वाले को टैक्स वसूल करने का काम करना चाहिए, और उसी प्रकार का टैक्स वसूल करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। जैसे अभी हम लेकर आए, जीएसटी में संशोधन लेकर आए और जीएसटी के बिल पर उन्होंने काम किया। ये कर जो है वो राज्य की आमदनी होती है, और ये कर जन कल्याण के होते, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए है। और इसमें जितने प्रावधान किए गए हैं, 4-5 प्रावधान है प्रमुख रूप से। एक तो 75 दिन में, 75 डेज में अगर इनेक्टमेंट नहीं हुआ है तो वापस करने का है। दूसरा ये है कि तुरंत प्रभाव से वो लागू हो जाएगा, जब तक फाइनेंस बिल आएगा तब तक लागू रहेगा। तो ये सब कानूनों का जो संशोधन हो रहा है, ये बदलते समय के हिसाब से हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कानून आ रहे हैं जो 1860 में थे, 1861 में थे, 62 में थे। ये 100 साल पुराने कानून जो इस देश में चलते रहे थे, उन कानूनों के कारण से लोगों में तकलीफ थी। अब जैसे पहले में अभी चर्चा कर रहे थे कि सेल्स टैक्स का कानून था, वो सारे कानूनों में जहां जहां इंस्पेक्टर राज कायम था, इसमें भी इंस्पेक्टर राज काम पर लगाम लगेगी, क्योंकि कानून बन गया है। जिस दिन पेश होगा रात को 12 बजे से लागू हो जाएगा, तो वसूली का काम हो जाएगा। वरना अगर ये गैप रहता तो कुछ जगह वसूल होता, कुछ जगह वसूल नहीं होता। तो टैक्स को सरलीकरण करने के लिए और टैक्स के सिस्टम को ठीक करने के लिए, और इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं रहे, इसके लिए ये कानून लाया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसके कारण इन टैक्सेस के बिलों का सुधार, इनमें संशोधन और नए टैक्स बिल लाने का काम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कारण से भारत की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। माननीय उपसभापति महोदय, आज 606 अरब डॉलर का हमारा विदेशी मुद्रा का कोष हो गया। आज 7.2% से हमारी जीडीपी की डेट बढ़ रही है। आज सारी दुनिया कह रही है 11 अरब डॉलर के हमने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं। हमारा एक्सपोर्ट दुगना हो गया है। हमारे टैक्स वसूली बढ़ गई है। राज्यों की जो माली हालत खराब हो रही थी, भारत सरकार के टैक्सों के वसूल करने कारण से, और उनको नियमित समय पर एक सिस्टम के माध्यम से उनके पास जाने के कारण से, आज कोई भी राज्य सरकार ये शिकायत करने नहीं आती कि भारत सरकार से हमारा पैसा नहीं मिला है। ऑटोमेटिक सिस्टम लागू कर दिया। तो ये कर व्यवस्था, कर प्रणाली और धन का जो सिस्टम मोदी सरकार ने लागू किया है, वो लागू करने का काम अपने आप में आर्थिक सुधारों को और आर्थिक को गति देने वाला काम है। तो इसमें सभापति महोदय, गति भी है और मति भी है। मति तो है ये बिल लाना, और गति है उसको वसूल करना। तो गति मति से युक्त ये जो सरकार है वो सारा काम कर रही है। इसलिए ये जो बिल माननीय मंत्री महोदय लेकर आई हैं, मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं, और ये बिल पूर्णतः ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम तिवारी जी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला। Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to support this bill, Provisional Collection of Taxes Bill 2023. This bill is very timely and it addresses the critical gap in our fiscal framework. This bill safeguards the fair and efficient implementation of tax policies. Sir, as we all know, adjustments to income tax and corporate tax rates are announced in the budget, and they take effect from the 1st of April of the year. However, changes in customs and excise duties
often crucial for managing our imports and exports, occur swiftly. This temporary discrepancy in the absence of this bill could create fertile ground for speculators to exploit, manipulate markets, and jeopardize economic stability. The provisional collection of taxes bill stands against such nefarious activities. It empowers the government to implement provisions related to customs and excise duties with immediate, though temporary, in effect. Let me be clear, we on behalf of our party, YSR Congress Party, support this bill. This bill stems not from a mere desire to plug a technical gap, but from a deep commitment to uphold the very principles of fair and honest taxation. There are few positives of this bill, sir. This curbs the speculative activities. The bill addresses the gap between the income tax, corporate taxes, and the immediate midnight implementation of customs excise duty changes. This prevents speculation and manipulation based on anticipated duty charges before the full finance bill is passed. This provides clarity and certainty on immediate implementation of duty changes and creates transparency for business and individuals, allowing them to adjust plans and operations without ambiguity. This upholds fairness. Speculative activities driven by duty changes can distort markets and disadvantage honest business people. This bill helps level playing field and ensures fair practices across the board. It also protects the economic stability. Uncontrolled speculation on anticipated duty changes can lead to market fluctuations and potentially destabilize the economy. This bill acts as a safeguard and against such economic disruptions. This also modernizes the existing framework, replacing the outdated 1931 Act with a contemporary legislative framework which ensures efficient and effective management of interim duty changes. It maintains flexibility. This bill allows for refunds or adjustments in case the declared provisions are amended or not enacted, protecting taxpayers from undue burden. This bill also provides streamlined processes. It streamlines the processes. This bill clarifies that tariff classification changes are not required for temporary duty implementation, potentially simplifying the administrative procedures. So, sir, overall, this bill is a very important bill that has come, and at the right time. We from our YSR Congress Party support this bill. Thank you. Thank you. Thank you, Manya Ajodhya Rami Reddy ji. Honorable Dr. M. Thambi Durai. Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has brought the bill, makes up an amendment or rectifying the already existing bill, the Provisional Collection of Taxes Act 1931. Sir, recently we have come across the Law Minister has brought so many repealing act he brought. We are still having in our constitution what is the British people created, the whole acts. Nearly about 360 statutes is still pending. It is one of the, I think this act is also prevailing in that. There is high time the ministers brought that certain changes, amendment in this, appreciate and that. So especially as other members said, when the budget is presenting, then after it's passing, that is a gap is there. At that time, this kind of speculations by putting unnecessary speculation and making certain taxes, that will create some problem. Their collections are creating problem. Therefore, the government has come forward to rectify this system, how to help the people already paid or excessive that paid, how to help. Same way, this especially customs and excise department, this kind of thing, as our other members said, especially export and import, that kind of things, our economy will stabilize, very, very important, I appreciate. So second thing I want already, when we spoke before the GST at that time, said, Inspector Raj, our member also said, Rajasthan from our member said, Inspector Raj. Inspector Raj is still, states are there, some states. Especially in Tamil Nadu, Inspector Raj is there.
even though central government is having GST like that, but they are taking some other form how to collect the money. For example, sales tax department is the state subject. It's still state, they are under control. I thought Inspector Raj, in that, they are unnecessarily going and harassing the people and putting fines and collecting money. I want to know from the ministry, minister, whether that collection also come to GST for that sharing. I don't know. That minister reply, when the sales tax department, state government of Tamil Nadu, putting fines and raiding certain companies or many places, that tax of money is coming. That money, whether it is coming to the GST pool, I don't know. I want to know from the minister whether the state government itself, Tamil Nadu government, own tax and using that, I don't know. That is one, that clarification also I want to know from the Honorable Minister. Thank you very much, sir. Thank you. माननीय श्री राम भाई हरजी भाई मोकारिया, माननीय श्री राम भाई हरजी भाई मोकारिया, प्लीज। सर, आपको मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, आपका आभार मानता हूं मैं। जी, ये जीएसटी का मोदी साहब ने सरकार जो जीएसटी माननीय मोदी सरकार ने धन्यवाद आपको हूँ सब गुजराती में बोलूँ છું મારી માતૃભાષા તથા મોટી બેન શ્રીમતી સીતારામજી વિત્ત મંત્રીને પણ ધન્યવાદ આપું છું। માનનીય સભાપતિ, જીએસટી આવવાથી દેશમાં સૌથી મોટો એક ટેક્સ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, એનો મતલબ વન નેશન વન ટેક્સ। માનનીય સભાપતિજી, જીએસટી પહેલા દેશની જનતા ઉપર અનેક અપ્રત્યક્ષ કરનું ભારણ હતું। જનતા ત્રાસ અનુભવી, પરંતુ દેશના દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળા મોદીજીએ પ્રજાનું દુઃખ સમજી ભારણ દૂર કર્યું અને જીએસટી પ્રજાના કલ્યાણ માટે અમલમાં આવ્યું। માનનીય સભાપતિજી, વિરોધ પક્ષનો વિરોધ હોવા છતાં પરંતુ આજે કર કલેક્શનમાં દિન પ્રતિદિન વધારો જોવા મળે છે। લોકો હકારાત્મક રીતે સ્વીકારી રહ્યા છે, સામે ચાલી ટેક્સ ભરી રહ્યા છે। પરિણામે દેશના વિકાસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહ્યું છે। દેશ ચારેકોર પ્રગતિ તરફ કૂચ કરી રહ્યો છે। વિકાસનો રથ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી વિકાસના મીઠા ફળ પ્રજાને મળી રહ્યા છે। આ મોદીની ગેરંટી વાળી ગાડી પૂર ઝડપે જઈ રહી છે। માનનીય સભાપતિજી, ટેક્સના આ લોકો ઉપયોગી સરળીકરણ ટેક્સ જીએસટી માટે પૂર્ણ ધન્યવાદ આપું છું। ટેક્સ કલેક્શન પણ ખૂબ જ વધવામાં છે, તેના કારણે દેશનો વિકાસ ચારે દિશામાં થાય છે। રેલવે, નેશનલ હાઈવે, પોર્ટ, બ્રિજીસ જેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વગેરે ડેવલપ થાય છે। સાથે સાથે દેશની 140 કરોડ જનતાને પાયાની જરૂરિયાત મોદી સરકારમાં પહેલી વખત મળી રહી છે। ટેક્સ કલેક્શન પણ દર મહિને 1,50,000 કરોડથી પણ વધારે ઉપર જવા જઈ રહ્યું છે। જીએસટીના કારણે દેશના ગરીબ, પછાત, આદિવાસી લોકોનો પણ પ્રથમ વખત ખૂબ જ વિકાસ થઈ રહ્યો છે, જે ખૂબ આનંદની વાત છે। શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, અનાજ વગેરે મફતમાં આ દેશની ગરીબ પ્રજાને મળી રહ્યું છે। વિરોધ પક્ષ માત્ર ખોટો વિરોધ કરવા પ્રધાનમંત્રી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિના પદની ગરિમા જાળવ્યા વિના માનવભવના પદનો વિરોધ કરે છે, જે ખૂબ નિંદનીય છે। વિશ્વમાં આપણા મહાન ભારત દેશની છબી ખરાબ કરવા પ્રયત્ન કરે છે। માટે 40 છે, 40માંથી 20 થઈ જશે। ધીમે ધીમે આ જ કામ કર્યું તો 20માંથી 5 થઈ જશે। આ ગૃહમાં હાલમાં જે લોકો વિરોધ પક્ષમાં બિરાજે તેને ફરીથી જો આવું જ હોય તો દેશની લોકોની સેવા કરવાની જરૂર છે, નહીતર જે હાલમાં સંખ્યા છે તે પણ 1/4 થઈ જશે। ફરીથી મોટી બેન નિર્મલા સીતારામનજીને તથા મોદી સાહેબને ધન્યવાદ આપું છું। ઝારખંડમાં હમણાં જ કંઈક 350 કરોડથી પણ વધુ કેશ રકમ આપણા દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચારની રકમ ઇન્કમ ટેક્સ રેડમાં પકડાય છે। આપણા મોદીની ગેરંટીની ગાડી આને કહેવાય। મોદી સરકારમાં માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય ત્યારથી માતા બાળકને સરકાર તરફથી સેવા મળે છે। જન્મ બાદ પોષણક્ષમ ખોરાક, આંગણવાડી, બાળ મંદિર, સ્કૂલ, હાઈસ્કૂલ, કોલેજ ભણવા જવા માટે, સાયકલ, પાયલોટ બનવા માટેના કોર્સની સબસિડી લોન, આ બધું જ ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર આપી રહી છે। મારું કહેવું એવું છે કે આ સરકાર પ્રથમ વખત એવી સરકાર આવી છે મોદી સાહેબની કે માતાના પેટમાં બાળક હોય ત્યારથી એની ચિંતા કરે અને અત્યારે આ જમાનામાં જે કોઈ વડીલ અવસાન પામે તો એના અંત્યેષ્ટિની પણ
સેવા મોદી સરકાર કરે છે, માટે હું એમને તથા મોટી બેનને ધન્યવાદ આપું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. એ બિલને સમર્થન આપું છું. धन्यवाद माननीय श्री राम भाई मोकरिया जी। ऑनरेबल डॉक्टर के लक्ष्मण जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I stand here in support of this bill introduced by Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitaramji. This is regarding Provisional Collection of Taxes Bill 2023. The bill may be very simple, but it has got very significant role because it not only simplifies and helps not only the government getting revenue, but also help in the overall development of the nation and even the poor of this country. So the Provision Collection of Taxes Act 2023 is being introduced to give immediate effect to the increased on newly imposed tax and empower the government to collect such taxes provisionally for the interim period. That is the period between the introduction of the bill and enactment of the bill. The interim period is limited to 75 days only. Sir, as far as Modi ji is concerned, he strongly believes in reform, perform, and transform. Whatever the reforms are being made that are truly implemented and strictly implemented to perform, and finally to see that that transformation takes place. The government is very active and swiftly take action. The decisions are acts made by the government. It's a very transparent and accountable governance we have been witnessing for the last 9.5 years. There is no such middleman role. There is no scope for Dalari Vyavastha at all in this administration. Yes, we have been seeing all such stuff, acts being now enacted. This bill replaces the erstwhile Provisional Collection of 1931 Tax Act. So you can imagine, within a span of this 9.5 years, hundreds of acts have been made for the convenience of the administration. So every rupee collected by this government, sir, we have been seeing how it's been spent to the welfare of the poor and even for the development of the country. Prior to Modi ji coming to power, India is supposed to be the 10th economic country in the world. So in spite of all odds, and we have witnessed the COVID and even that Ukraine-Russia war. Modi ji being a visionary leader, though he hails from a very poor family, he had a vision. So now India is supposed to be the 5th largest economic country in the world, but for his visionary leadership. The reserves which we had spent more on infrastructure, and we have seen almost 27 lakh crores of rupees have been directly being sent into the accounts of the poor people of these countries. So for the last years, we are witnessing Bharat is supposed to be the fastest growing country in the world. So the growth rate is almost 7.6%. So now the Bharat is being called as the growth engine of the world. Now the inflation prior to Modi ji, it was 10.8. Now it's supposed to be 5% only. By 2027, we visualize the consumer market will be double. So you can imagine how the country is marching fast towards the development. And I, being represented from UP is supposed to be called one of the Bimaru states in the country. Now you see, UP is the second largest economic state in the country now. This is but for the double engine Sarkar, Modi ji and Yogi ji put together, which has got double impact in we are witnessing in this UP state, sir. So our beloved Prime Minister, he always thinks of next generation. But our critics, our opposition parties, our regional parties, they only think of the next elections. That is the difference between Modi ji and other parties, sir.
You see, we have seen in the recent past elections, how people like auction, they announce guarantees. One says 2,000, one says 4,000, one says 5,000. But finally, people have believed only in Modi guarantee. What Modi ji says, he does it. We have seen the results of last 5 elections. Everywhere, the BJP and Modi ji's this development and welfare of the poor has been impacted. We have seen 13.5 crore people from the below poverty line have been come up, and now they are into the middle class. This is a change we see. So this is being part of economic reforms. This billing is brought by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji. I wish and I support this bill and see such more reforms in the larger interest of the country. By 2047, we can see that India is going to be a developed country. When Modi ji becomes third time Prime Minister, India is going to become a third largest economic country in the world, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Now, a message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 20th December 2023 passed the Telecommunications Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Dr. Anil Bondeji, last, okay. Will not speak. Okay, thank you. Now, Honorable Srimati Nirmala Sitharamanji to reply the discussion. So thank you very much, sir, and I thank all the members, 7 of them who have spoken on the bill. It is a small amendment, technical amendment, but essentially the law which existed since 1931, which is called the Provisional Collection of Taxes Bill 2023, is what is essentially coming in this form now. There are no major changes at all to this bill. As it existed since 1931, we carry forward. But then why are we bringing here? It is part of the larger relook at all the bills, so that any colonial past residues are in these acts. We want to remove them and make them reflective of modern India, the new India that we're trying to build. And in this particular bill is very essential. Even before it was essential, it will be essential even now. Why is it essential, sir? Sir, that partly also answers the question raised by Sri Amar Patnaik. When taxes are levied during the budget, sir, and it becomes a part of the finance bill, the finance bill along with the budget gets introduced and read out to the House on 1st February every year. But post that, the Parliament committees, Parliament itself, both Lok Sabha and the Rajya Sabha discuss it. Rajya Sabha returns it after being passed by the Lok Sabha. But there is a certainty about it in that every proposal, for instance, on the direct tax, which is income tax, let us say, when brought in through the finance bill, gets effective from 1st April. That is the new financial year. Whereas there are taxes which are also levied in the name of customs duties and also excise, which are taxes levied on goods and services. Now, having announced it along with the finance bill in 1st February, if we wait till the effective financial year, 1st April, that period in between the gap can lead to a lot of speculation, can lead to a lot of exploitation in terms of goods which are kept in some place, and so on. So we start the collection of tax from the midnight of that day itself. Otherwise, the speculation can hurt the market. Speculation can lead to customers suffering from it, and export-import at the port can be misused.
So that in very common language is the purpose of this provisional collection of taxes bill. As it is, to levy taxes, sir, our constitution provides tax shall be imposed unless or levied or collected unless there is an authority of law. That authority of law, with a law that is passed by this House, August House, is the one which will empower the government to collect the tax. Which is the provisional collection of taxes bill, which when passed as law, which existed as law, which exists till today, is the one which gives that authority to the government. Now, why do we want it provisionally? Meaning, anyway, the finance bill is going to get passed in the House, and once it is passed, it becomes complete authority, you can collect. But in the middle, interregnum, why do you want a provisional authorization? As I said, it is only because we want to avoid speculation. And during the period of introduction and enactment of the bill, customs or central excise duty, where such duty rates, for instance, are increased beyond a statutory rate or and then gets approved by the parliament. In between, when you go to collect it, there can also be a questioning of authority. You increased it, the parliament has not passed it. After it's passing, it will come into effect only from 1st April. How are you coming to collect it? So I need that legislative backing for collecting the customs duty from that midnight itself of the budget presentation. That is why, sir, the reasons again, which I would like to underline, are to provide tariff protection to domestic industry. Sometime you want to protect the Indian industry, you bring it with immediate effect. Then they would say, oh, how did you bring it with immediate effect unless there is a legislation which I can invoke? So it is to protect the domestic industry on an immediate basis, moderate prices, meaning when the prices are going up, I need to moderate it. I need some immediate action. So I come up with taxation. And also, as I said earlier, to avoid speculation in the market. Oh, today the announcement has been made. It will come into effect only from 1st April. In the meanwhile, I can hoard the goods. This should be avoided. That is why, sir, we have always relied on this provisional tax collection, but it also has one redeeming factor, and that is whatever is done here will have to be, that which is brought immediately with sense of urgency, will have to be approved by the parliament within 75 days. So then within 75 days, when that is approved, I can go ahead collecting it further, like the way I've done during the interregnum. But if that approval doesn't come, it also tells you that you have to refund the money back. So this provisional collection has its own safeguards, at the same time gives authority to the government, legislative authority to the government to collect, to avoid speculation, to control prices, to avoid also illegal practices such as hoarding and speculation and so on. So that is as simple as it. This is the purpose of this bill. I'd like to submit to your consideration and to the House's consideration so that it gets passed. So there's just one response that I would like to give beside the whatever is contained in the bill. Amar Patnaik ji seems to have asked, why are you coming up with a separate bill? It can be a part of the finance bill itself. So I want to say the very explanation that I've given here is the reason why it can't be part of the finance bill and wait for it to get cleared till 1st April. Wait for it to get cleared when the second half of the budget session happens, when after the committee meetings and everything else, I come to the House to get it passed. Again, that interim period will go without any cover for the collection, and that is why it can't be done through the finance bill. It has to be a separate act. And also, he said, why would you want to introduce it in the middle of the night? Why can't it be the next day? The same thing, sir. Once the new sun rises the next day, it will also give them more time for speculation. So I hope that addresses the concern raised by the Honorable. Thank you very much. Thank you.
Now, the question is that the Provisional Collection of Taxes Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 6 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Honorable Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. So I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. That the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Honorable members, there are 28 permitted special mentions for today. As all the members concerned are not present, I suggest that the special mentions of those honorable members who are present may be deemed to be laid on the table of the House. Consent? Thank you. The approved text of the permitted special mention of the honorable members who are present now shall be treated as laid down on the table as per the consent of the House. I'll just read their name. Honorable Sri Irana Kanadi, concerned regarding beneficiary of Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi Yojana. Sri Kamakhya Prasad Tasa, Dr. K. Lakshman. Dr. Kamakhya Prasad Tasa, concerned over damage caused by elephants. Dr. K. Lakshman, request for Honorable Sri Irana Kanadi, present? Not present? Sri Kamakhya Prasad Tasa, Honorable, present? Present. Dr. K. Lakshman, present? Okay. Sri Naresh Bansal ji, present? Mani Sri B. Lingaya Yadav ji, not present? Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, present? Sri Biplav Kumar Dev ji, present? Not present. Dr. Amar Patnaik ji, present? Not present. Honorable Sri B. Vijay Sai Reddy, present? Not present. Dr. Sikandar Kumar, present? Present. Sri Sadanand Seth Tanwade, present? Present. Mani Sant Balbir Singh ji, absent. Dr. Fauzia Khan ji, absent. Dr. Ashok Kumar Mittal, absent. Sri Lahar Singh Siroya, present? Present. Sri urgent action required to restore Bengaluru glory. Ms. Indu Bala Goswami, present? Present. Demand for CGS Wellness Center in Kangra, Himachal Pradesh. Manishri Dhananjay Bhimrao Mahadik, present? Present. Manishri Kishan Lal Pawar, present? Present. Manishri Bijlal ji, present? Present. Mani Dr. Sasmit Patra ji, present? Mani Sri Ramchandra Jhangra ji, present? Present. Mania Srimati Kanta Kardam ji, present? Present. Present. Demand to develop Hapur as a spiritual city. Mani Sri Kyarin Rajesh Kumar, not present. Mani Sri Vijaypal Singh Tomar, present? Present. Mani Sri Sushil Kumar Modi ji, present? Not present. Mania Dr. Kalpana Saini ji, present? Present. Mani Sri Bhuneshwar Kalita ji, present? Present. Mani Dr. Lakshmikant Bajpayee ji, present? Present. Dhanyavad. Mani Sri Irana Karadi ji, present. It will be treated as present now.
माननीय सदस्यगण, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, that is the 21st December 2023.